So National Bank Stadium here in Karachi, and the series scoreline suggests 2-1, and this 5-match T20 International Series hangs by a thread. The visitors, South African Women's Under-19 team, struck first, winning the game by 4 wickets with plenty of balls to spare. But it was the home team, Pakistani girls, that answered emphatically with a 47-run victory in the second game and making a statement. But once again, the third game belonged to the visitors. 158 on the board, and the Pakistan team folded for 106. A big victory with a 52-run margin and a comprehensive win for the South African Women's Under-19 team. So tonight, the equation is brutally simple. South Africa win and the series belongs to them, and if the home team wins today, we go to a nail-biting final match on Friday. No margin, no second chances. The hosts must front up. Back to the wall, under lights, in front of their home crowd. Pakistan Women's Under-19 versus the South Africa Women's Under-19 team. It's game 4, win, and you stay in the series, or it's done and dusted for the home team. Welcome back once again from the National Bank Stadium, Karachi, where the University of Lahore presents Rivaj. Pakistan versus South Africa Women Under-19 series is taking place. This series has become very famous because of the comebacks that both of the sides have made so far. But at this point in time, this is match 4, which is just about to get underway. The visitors are one step ahead into this series, and if right then they won the last match quite comprehensively by 52 runs. Take a look at the result of the series so far. On Tuesday in the first match, South Africa winning by 4 wickets, and on Friday in the second match, Pakistan bouncing back with a very good 47 runs victory, and on Sunday it were the visitors which really demolished the opposition by a big margin of 52 runs. It has been a nerve-jangling series so far, but the visitors are absolutely having a ball out here in Karachi. Right then, a little while ago, our pitch doctor Ali Yunus was having a good look at the 22 yards. Yes, another beautiful evening here in Karachi in a must-win game for Pakistan. And South Africa, if they win it, they win the series. As far as the surface is concerned, something to cheer about for Pakistan, because this is the same surface that Pakistan won the game, but batting first. And if I have a look closer to the surface, groundsmen, they've done a fantastic job. I have to say this. The pitches have been very balanced for the both sides, but this surface, they've left a bit of grass on this surface. If you can just clearly see it. So that grass will just keep it together. It's very hard. So that shows that the ball will come nicely onto the bat. In my opinion, you have your basics right and you should be good to win the game. But again, in my opinion, the toss is very vital. You win the toss, bat first, put pressure on the opponents. So it was Ali Yunus who was explaining how the pitch might behave in today's match, and he thinks that any side that will go on to win the toss should be batting first. There is obviously some grass present on the 22 yards which will help the bowlers as well as the batters. Remember, it's the same pitch where the home team were able to win the second match of this T20 International Series by 47 runs. So let's see whether the home team will be able to level the series, or will the visitors take an insane lead of 3-1 in this 5-match T20 International Series. It has been a wonderful bilateral series between the two very talented sides, obviously preparing for the T20 World Cup that will be played after a few months in Nepal and Bangladesh. So it's going to turn out to be a really good preparations for both the teams. The weather has been pleasant throughout the last week. The temperature is slightly on the higher side today. If you look at the bottom left of your screen, 32 degrees centigrade, but once again a very strong breeze flowing across the ground. It's a very windy day at National Bank Stadium, which will obviously assist the bowlers as well as the batters. Yeah, always it's pretty humid and a lot of moisture in the air.
when you feel the weather of Karachi. I can't stop myself sweating in the daytime. Well, a short while ago, Zishan Khalid was there in the center with the all-important two captains for the toss. All right, so toss time here at National Bank Stadium in Karachi for the 4th T20 International of University of Lahore presents Riwaj Under-19 Women's T20 International Series between the Pakistan and the South African team. A must-win game today for the home team as the visitors lead the series by 2-1. I've got both the captains with me for the all-important toss. Fizza Fiaz, the captain of Pakistan Women's team. Mieke Voorst leading the South Africans, and our very own match referee, Mr. Kamran Chaudhary. So the home team skipper, Fizza, will be flipping the coin. Heads is a call from Mieke. And it has come down as heads. So South African girls have won the toss. Mieke, what are you going to do and why? We're going to have a bat. All right, so you had a perfect game. If you talk about the previous game, you scored runs with the bat, including your wonderful batting. And you had a fantastic outing in the field and with the ball as well. So we'll be looking to replicate the performance in today's game as well. Yeah, I think we took the learnings from the previous game and we just come out harder today. All right, so it looks like a really good pitch. So how much score can we expect from your team today? I think we're looking at the 160 again. All right, so are there any other changes in the playing 11 today? We've got 3 changes. Van Wyk is in for Boshoff, Philander in for Comfort, and then Toba in for Van der Merwe. All the best, Mieke. Go well Thank for you. today's game. Fizza, unfortunately, आज एक बार फिर टॉस ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपका क्या फैसला होता? हम भी बॉलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि देखें ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में हम सेम गलतियां करें, तो हमने जो इम्प्रूवमेंट जहां करनी थी वहां हमने की है और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओपोनेंट टीम के मुकाबले में आप पे ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि मस्ट विन गेम है, तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करने का सोचा है? देखिए, नॉर्मल गेम खेलेंगे क्योंकि वो गलतियां हो जाती हैं और अब कोशिश करेंगे वो गलतियां ना करें, तो ऑटोमेटिकली हम नॉर्मल प्रेशर नहीं लेंगे। अगर हम तीनों डिपार्टमेंट्स का जिक्र करें तो फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आपकी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम चाहे कैचेस का जिक्र करें या डायरेक्ट हिट्स का जिक्र करें, सो डू यू थिंक दैट देयर इज समथिंग फाइन ट्यूनिंग नीड्स टू बी डन इन द बैटिंग? देखें, तीनों डिपार्टमेंट्स में हमें अगर देखा जाए तो पिछले मैच में तीनों डिपार्टमेंट्स में हमने थोड़ी थोड़ी गलतियां की हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी जा रही है और ओवरऑल बैटिंग में इम्प्रूवमेंट है, बॉलिंग में है, तो इंशाल्लाह आज तीनों डिपार्टमेंट्स में अच्छा होगा। आज के दिन कोई चेंजेस है प्लेइंग 11 में? जी, रोजीना इज इन एंड मेमुना इज आउट। चलें, go well for today's game. Thank you. So you heard from both the captains. It was South African Women Under-19 scheme skipper Mieke Voorst. They have won the toss and they will be batting first. Well, a beautiful weather once again you can watch from the Karachi, and the atmosphere is just not stopping the visiting captain from deciding to bat first. Yes, there will be a little bit of shape for the bowlers in the first 15 minutes or so, but taking a look at the pitch, it really looked like a belter of a surface, and with a lot of confidence, especially by her own performance in the last match, the captain of South African girls has shown no hesitation whatsoever. She was pretty obvious, and on the other hand, it's kind of a do and die situation for the Pakistani girls. They need to make a good comeback. Yes, we have seen in this series, both of the sides have made significant comebacks, but this is going to be very important, how the home side will be able to cope with the situation up till now. Yep, very valid point made. Both the officials are making their way out there at the center to officiate this all-important encounter between the two teams. Pakistan Women's Under-19 team are going to be stepping up for this all-important game. Remember, if they lose this one, then they're going to be out of the series. If you take a look at the playing 11 of both the teams, first it's going to be the visitors. Van Wyk, Chanel Venter, the player of the match in the first game. Mari, who has batted beautifully. Rensburg, Jai, Ditipe, who bowled really well in the previous match. Mieke Voorst, their captain, who batted beautifully. Mia Lenore, I think she has bowled beautifully with the new ball. Quickest of the lot. Mabasa, Joyce, and Shreya, who had a decent time with the bat in the previous match. Right then, if we take a look at the home side, they have Komal will be opening the batting alongside Ravel. Zofi Shah, Aksa, she looked very good in the opening match. Arisha, Fizza Fiaz, the captain obviously, and Shahar Bano has been very impressive both with the bat and ball. Mahanu, Zaid, Rosina and Maham Nazakat, she bowled brilliantly in the last game, will be the part of the playing 11. South African winning the toss and opting to
bat first on a very good surface, I'm sure we are going to have a cracker of a game as both of the opening batters are jumping their way to the center. Yeah, the openers look really confident as they were making their way out there at the center. Both the captains winning the toss, getting what they wanted. South Africans winning the toss and had absolutely no hesitation in batting first. It looks like a really good batting pitch. Obviously, there is some grass available for the fast bowlers, so they will also enjoy these conditions. The weather has been pleasant. The South Africans obviously feeling much more confident, especially the way they won the previous match by a handsome margin. No matter if the first 15 overs did not go in their favor, but they were able to bounce back strongly in the last five, as a result of which they posted the highest total so far by a team in this series. 158 is what they got, and the captain suggested that they'll be looking to get 160 once again. Left arm seamers are going to be very important on this pitch in these conditions. They have been really impressive, talking about Sheher Bano or Mahanur. Whenever they have looked to pitch the ball up, they have been able to get that swing back into the right-handers, and early breakthroughs are going to be crucial for the Pakistan team. I've got Ali Yunus alongside me in the Combugs. Ali, series is nicely poised. Obviously, the pressure will be on the Pakistani team. Absolutely. Pressure surely will be on Pakistan, but we've seen glimpses of brilliance from Pakistan side, especially their bowling lineup. I think that has been the key in this series. They've been very impressive. They've been the talk of the town. Everyone in Pakistan, at least, they've started talking about them. All eyes on them, and I'm pretty much sure this will be their evening. So umpire says it's play. It's time for the first ball of the fourth match, this T20 International Series. Slightly uppish. Gentle medium pace to start off with, but you could see the shape back into the right hand, and that movement will be very crucial for both the left arm seamers that will be in operation today for Pakistan. Yeah, they have the capabilities, they have the potential to do it. And the conditions, especially in Karachi, we've been talking about it around about this time. It does seem around for the fast bowlers. She goes for a quick single. Well, they have lost few wickets courtesy of run-outs, and that could have been very close if the keeper had gathered the ball cleanly. Yeah, because Pakistan have been throwing them direct to the stumps most of the time in this series. And Komal may be thinking one more time, it will be a direct hit, not to be. But I like the energy. They're all chirpy, they're all over these openers of South Africa. And you like it when Pakistan are in this mood. This one, captain a little slower to react, but direct hit, surely would have been a different story. And once again, that point comes when the fielders, especially if you talk about the Pakistani fielders, during the power play even, they're standing at the edge of the ring. Yeah, very interesting field set to start off the inning. They've got a deep cover in place to start off the proceedings, and a third inside the circle and a deep square leg in place. Have a look at the third is inside the circle. They've got a cover fielder. Normally we see a point fielder at the boundary line, but they've got cover fielder out at the boundary line. And then the square leg. We'll talk more about it. Nicely bowled. Right in that block hole. There is nothing much Shreya could have done about that. And one of the reasons of having that sort of a field setup must have been that Shreya was really aggressive in her previous outing. She got 3 boundaries in her innings. Yeah, Pepsi, the proud partners of the series. And also, maybe in my opinion, that Pakistan don't want South Africa to get to a very good start. They don't want to be giving too many runs away, because, you know, Pakistan get shaky when they chase down any total. Well, she was caught on the back foot there. Initially decided to go on the front foot, but then stayed back looking to cut it, but missed it altogether. Yeah, good pace by Zaib. She's been the most impressive bowler of the series. We haven't seen much swing so far, the first 5 deliveries that she's bowled. Even Captain Fatma Sana, who's here in the commentary box, she was really impressed by Zaib.
the aggression that she brings in the side, that's just brilliant. Slightly short and she gets away with that. It was there to be pulled, but got an inside edge, hitting the pads and going absolutely nowhere. So a brilliant start this from Zeb. Just one coming in the over. After the first over, South African Women's Under-19 are 1 for none. Brilliant weather in Karachi, the beautiful city of lights they call it. The weather has been just brilliant. I've been here for 3 days and I've just loved it. Back home in Lahore it's been raining but still very hot. Yeah, the Mother Nature has been very kind in this part of the country. I'm pretty sure you will be telling us more about it, especially when you were here for the Women's ODI and T20 International Series between the Pakistan and the Zimbabwean team. Rosina Akram included in the playing 11 today. Will be sharing the new ball alongside Zeb. Starts off nicely. They went with a similar combination in the first couple of matches as well. Pakistan team, left arm Seema and Rosina bowling in pair with the new ball. Oh, that's a top edge. It's chance for the bowler. Oh, taken. Ravel takes a really good catch. There was almost a collision between her and the bowler, but she made sure that she kept her eyes on the ball till the last moment. And it's a big wicket because it's Chanel Venter who will be walking back. Absolutely, it's a massive wicket. She's been amongst runs for South Africa, but not to be again one shot too many. She wanted to go big. And Rosina has been very smart with the length, with her pace that she bowls at. There are no worries, probably. I can't really tell. But it's just amazing the way she bowls, that loop that she gives, the air that she gives the ball. Not scared. Inviting the batter to hit big. Now there's no way we can tell from this angle, no way. Yep, obviously you could not really see clearly, but it was looking very obvious that her foot was landing on the popping crease. So first wicket gone down for South Africa. Chanel Venter walks back after scoring just one. And they're one down, the visitors. One right-hander departs, the other walks in. Deirdre Ransberg has got some runs under her belt in this series. Out there much more earlier than what she would have expected. She's not a big turner of the ball, but her line and length has been immaculate. Yeah, and the pace that she's bowling at. She's not rushing through, she's just giving it air, waiting on and then bowling. That's a good sign of a good bowler, good confident bowler. Slightly upish and just gets it over the captain's head. It's going to be the first boundary for South Africans and a confident start this from Rensburg. Yeah, the captain was in business for a little while. She's at mid-wicket position, the captain Fizza Fiaz. This is a good delivery again. She just forced this shot. It wasn't that shot, and yes, could have easily gone in the hands of the captain any other day. Off the back foot. Once again, the ball just holding on to its line. Good start this from Rosina. Even the boundary that she got in the previous ball, it was touch and go because it wasn't far away from that outstretched right hand of Fizza. Nicely bowled. It's going to be a dot to end the over. A successful start this from Rosina.
2 done. South African girls are 5 for 1. Exactly the sort of start that Pakistani girls were after. On a lot of runs and a wicket already for the girls in green. Once again, almost standing at the edge of the ring. That just allows these batters to run that single easily. Yeah, remember, this is exactly something we discussed in the previous game also. I mean, this is the third over, you got 1 wicket down already. And if you see, almost everyone inside the circle coming from the edge of the circle, it means that you're happy giving away the single. And that's the reason Pakistan, that partnership, remember in the previous game, that took the game away from Pakistan. Hitting the pad but angling down the leg side. It's a good line of attack this from Zeb, although she has been a little too straight for my like, and if she can start off from about that off-stump channel and bring the ball back in, I think she's going to be in business. Yeah, because in the previous over, the first one that she bowled, she didn't get much swing. Here, the previous delivery and this, a little bit hint of swing, in swing. Have a look at this, in the air and after pitching also, just a little. So now maybe you see whatever you're referring to, you might see that line now. Yep. Presenting the full face of the bat. They won't feel afraid of taking their time at the crease because they do realize that even if they go off to a slow start, they have those batters, they have those abilities to make use of the last 5 overs like they did the other day. 60 odd runs in the last 5 overs completely set the tone for South Africans. And you got to give the credit to the captain. She doesn't speak much, but she let her bat do all the talking the other day. Once again, just angling down the leg side, but it's a good start this from Zeb nevertheless. You can argue that some of those deliveries could have been hit away for boundaries, but she has been able to put the opposition batters under extreme pressure and on the back foot. Yeah, again, pitching outside the leg stump. I think that seems to be the plan. Just frustrate them. Don't give them boundary deliveries. Let them grind. Let them hustle for the boundaries. Nicely driven and a bit of a misfield. That will allow the ball to go past and touch the boundary ropes. Not what they wanted. Yeah, that's not good. That's really not good. Because your bowler is bowling brilliantly. They put the pressure on the batters. And then you let go. A straightforward chance through the hands. So it's timed nicely, but no, that you got to stop those. Just cannot let these easy boundaries to the opponents. It was Ravel again who took that catch to get rid of Venter. Way down the leg side. Nicely gathered by the keeper though. He's standing very close to the stumps. I'm pretty sure it's because of not a lot of pace that Zeb is bowling with. And also the nature of the pitch. It's not the quickest that we've seen. It's on the slower side. It will get slower and slower with the time. That fielder out in the deep. A deep square leg. Nicely bowled. Went after that one, chasing that one, but just couldn't get any bat behind that. A dot to win the over, 3 done. It's a slowish start from some of the South African girls. They are 11 for 1.
Into her second over now, Rosina. Marking her guard again, Shreya. They've got the fielder now at long gone, so they will be inviting her to go straight down the ground if the ball is pitched up. Mid-off is up. Two fielders inside the inner ring on the offside and a long gone in place. Yeah, she's not giving any pace to the batters, bowling it slow, very slow. Inviting the batters to do something, create their own pace, maybe use the feet, come down the track, do something different, because they're not going to get anything from Rosina. Well, she was in two minds. She was looking to come down the pitch, but then Rosina cleverly just altered the pace and pushed it slightly quicker through the air. It's a learning curve for these young girls, and they seem to be learning very quickly. In the air and just over. Don't think the mid-off fielder will be able to cut that one off. It's a fortunate boundary this for Rensburg, but they'll take it nevertheless. Absolutely, they'll take it from both hands. Ravel, the fielder, again in action. And just when we thought she's come inside the circle a few yards, it has gone right over the head. Have a look at this. She was in a few yards and the ball went up from her. Once again, similar shot, but this time it's in the gap. They've got protection now into deep. It's been very impressive, Rosina. She comes from Wakant, by the way. So does Zufi Shahan, both of them. It's good to see that young talent coming from these cities. Oh, lovely. Now, was there some bat involved? The reaction from the keeper suggests that there was a fine edge, and had that been taken, Shreya would have been going back. 4 done. It's 17 for 1. That's the playing 11 for the visitors today. They made 3 changes. Ashley Van Week will be in action today. A lot of players who have impressed us a lot in this T20 International Series, especially Mia Lelor, the way she has bowled with the new ball. Every day just before the game begins, you can just see how she prepares. Change in the bowling now. Coming around the wicket, Mahanur, the left arm seamer. Yeah, you just mentioned about South African girls. I'm really looking forward to see Ashley Van Berk, the leg spinner, back in action. She was very impressive. I even asked the captain in the last time that why isn't she playing. She was not 100% fit in the previous game, because having a leg spinner with such control is always very handy for the captain. Yeah, especially when you've got all the skills to be bowling with the new ball. Manur has had a decent series so far, 3 wickets for her. The economy has been under a runner ball, so it's impressive stuff. Nicely driven, but they've got those 2 fielders in the deep, one at deep extra cover and one at deep backward square leg to prevent those flurry of boundaries in the first 6 overs. Shreya has been kept quiet so far. Oh, that was coming in. He definitely has much more pace as compared to Zaid when she was bowling in the first couple of overs. And the quicker you bowl, the better it comes onto the bat. Hits it hard, hits it down the ground. No chance for mid-on. That's going to be the first boundary for Shreya, and a good one indeed. Yeah, that's hammered.
She said, "I've had enough," because she was kept a little quiet, but not to be on this occasion. Yeah, look at this, eyes wide open. It was hammered, yes. Straight down the ground for 4. Beautiful shot. Very powerful shot, rather. As a left-arm seamer, when you're looking to come around the wicket first up, it almost becomes predictable for the right-hander that everything is going to be coming in. There you see in the air and just over mid-off. She's living dangerously right now, Shreya, but she's getting those valuable runs for her team. Yeah, the fielder was in business one more time. Yes, they're hitting boundaries, but very risky boundaries. This is, in fact, the 3rd occasion in this game already that the ball has just gone over the head of the fielder again. She was in business. A taller bowler, maybe. Yeah, they needed someone like Mia Lenore in their side to take a catch like that one. Absolutely. Nicely bowled. But a really productive over this from the South African girls. 9 runs coming off it. 5 done. They are 26 for 1. And with that, it's time for a change in the voices in the comm box. To take you further for the next 5 overs, it's going to be FS Malik alongside Naseem Rajput. बहुत शुक्रिया ज़ीशान खालिद और अली यूनुस। 5 ओवर्स में 26 पे 1 विकेट गंवाई है यहाँ पे साउथ अफ्रीकन गर्ल्स ने। रोजीना अपनी बॉलिंग को जारी रख रही हैं। स्वीप कर दिया है खूबसूरती के साथ, मिड विकेट के बीच में चौका हासिल करने में कामयाब हुई। ऑल अलोंग द कारपेट कंट्रोल्ड स्वीप खेली है नसीम राजपूत। बिल्कुल फलक, जिस तरह पहले 4 ओवर खासे बेहतर रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट की जानिब से, जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट ओवर जिसमें 2 बाउंड्रीज लगी और इस ओवर में भी बड़ा अच्छा एक ऑन साइड की जानिब स्वीप शॉट खेलकर 4 रन हासिल किए। तो पावर प्ले का आखिरी ओवर है, उसे पूरा फायदा उठाएंगे यहाँ। ये अच्छा बॉल था, यहाँ पे आउटसाइड एज होते होते बचा। कोई ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही रोजीना को, लेकिन लाइन और लेंथ अच्छी है। लेकिन ये बॉल उन्होंने सीधा किया था और पिछले ओवर में रोजीना की इसी तरह की गेंद पे कैच भी ड्रॉप हुआ विकेट कीपर से। और इस बार ऑन साइड की जानिब जबरदस्त हिट, एक और बाउंड्री हासिल की यहाँ रेंसबर्ग ने, और साउथ अफ्रीका की टीम आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम हासिल करती हुई फलक। जी हाँ, बिल्कुल पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पे रेंसबर्ग। ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का, और इस मरतबा हवा में जरूर खेली थी, लेकिन ताकत इतनी थी स्ट्रोक में कि किसी भी फील्डर के पास कोई चांस नहीं था। 2 टप्पे खाने के बाद गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के लिए। इस बार अच्छी लेंथ पर गेंद थी जिसे ऑन साइड की जानिब खेला, डॉट बॉल। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन टीमों के साथ हमारी अंडर 19 टीम, अंडर 16, अंडर 17, ये प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। इस मरतबा रोकने में नाकाम रही बॉलर, लेकिन मिड ऑफ की फील्डर ने उसको कवर किया। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हमारे स्पॉन्सर्स, क्योंकि पीसीबी का ये जो इनिशिएटिव है ग्रास रूट लेवल से, अंडर 17, अंडर 16, अंडर 19, और फिर इस किस्म का प्लेटफॉर्म मुहैया करना इन गर्ल्स को, यकीनन इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा फ्यूचर में जाके। और इस बार गैप हासिल करने में कामयाब हुई फील्डर वहां मौजूद, लेकिन 1 रन पर ही इक्तिफा करना पड़ेगा, और इसे 1 रन के साथ पावर प्ले खत्म हुआ। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने स्कोर किए। पाकिस्तान 1 मैच के डेफिसिट में जरूर है, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम हमने अपने बॉलर्स की जानिब से देखा, फील्डर्स की सपोर्ट अगर उसी तरीके से मिले, जो थोड़ा सा हमारा मसला हमेशा से रहा है, तो बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, ये
लेडी अंपायर पावर प्ले के ख़त्म होने का सिग्नल करते हुए कि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो अब हटा दी जाएंगी। ये पावर प्ले में आप देख सकते हैं कि पहली विकेट जो है वो अर्ली हासिल कर ली थी। अक्सा ने बड़ा खूबसूरत कैच पकड़ा था और उसके बाद रेंसबर्ग जो हैं उन्होंने बड़ी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया। स्लॉपी फील्डिंग भी देखने को मिली। फील्डिंग थोड़ा सा मसला ग्राउंड फील्डिंग का रहा है पाकिस्तानी गर्ल्स का, लेकिन इनकी कैचिंग और थ्रोइंग एट द स्टंप्स जो है वो बड़ी एक्यूरेट रही है। अच्छी गेंद महानूर ने थोड़ा सा एक्सपेंसिव ओवर किया था पिछला, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर था वो पावर प्ले का। अब फील्ड खुल गई है, यहाँ पे जगह पे गेंद करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। या नसीम भाई, अगर इस सीरीज की बात की जाए तो इसका कुछ तसलसल ऐसा ही रहा है कि पहला मैच साउथ अफ्रीका ने जीता, फिर पाकिस्तान ने कम बैक किया और तीसरे मैच में फिर साउथ अफ्रीका ने जो है वो साबित किया कि वो स्ट्रांग थी ऑन द गिवन डे। और आज अगर देखा जाए उस तसलसल को तो बारी पाकिस्तान की है, लेकिन उसके लिए दे विल हैव टू बैट आउट ऑफ एंड प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स। इस बार देखना होगा और कैच लेने में कामयाब। ये सेकंड कैच लिया यहाँ और महानूर दूसरी कामयाबी पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 को दिलाने में कामयाब हुई। रेंसबर्ग जो अच्छी बैटिंग कर रही थी उनकी विकेट हासिल की। जी हाँ, एज ए बैटर अगर आपको बॉल एरियल हवा में खेलनी है तो फिर इन लड़कियों के बिल्कुल आसपास ना खेलिए, गैप तलाश कीजिए, वरना इनकी कैचिंग जो है वो बहुत उम्दा रही है अब तक सीरीज में। ये आप देखें, फ्रंट फुट का कोई मसला नहीं और एक खूबसूरत कैच एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर इंचेस ऑफ द ग्राउंड जिसे हम कहते हैं वो पकड़ने में कामयाब हुई। और तीनों लेफ्ट हमारी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़ी जबरदस्त गेंदें कर रही हैं। उनका बॉलिंग एक्शन बड़ा जबरदस्त, अंडर 19 की एज में वो जिस जगह पे गेंद को डिलीवर कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा है। 23 रन बनाकर जिडरे वैन आउट हुई, 23 गेंदों का सामना किया, रन बॉल खेल कर गई और शुरू के अंदर विकेट गिर गई थी तो उसके बाद एक एंड उन्होंने ज़रूर संभाला। अब तक पाकिस्तान अप टू द मार्क है। और मुझे साउथ अफ्रीका की सीरीज़ याद है, पाकिस्तान टीम ने जो लास्ट जिम्बाब्वे से पहले टूर किया था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी। हमने 360 के जवाब में 350 भी किया था एक ओडीआई में, तो हम बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेल कर आए थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूविंग की जानिब ज़रूर है और ये इस तरह की सीरीज़ बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएंगी फलक। जी हाँ, बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा नसीम भाई आपकी बात से। और ये कप्तान जो हैं वो क्रीज पर आई हैं नंबर 4 की पोजीशन पर, मीका वैन वोस्ट। 73 रन इन्होंने 62 गेंदों का सामना करते हुए सीरीज में अब तक बना रखे हैं। 117 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है, एक हाफ अ सेंचुरी इन्होंने स्कोर की थी पिछले मैच में, 58 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। यकीनन इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बुलंद होगा। अच्छी बॉलिंग महानूर के अंदर की जानिब गेंद आई थी, थोड़ी सी वेवर्ड थी जिसका फायदा उठाया ऑन साइड की जानिब, स्क्वायर लेग पे खेलकर 2 रन हासिल किए। इस तरह मिकी ने अपना खाता खोला। जी हाँ, जब आपको थोड़ी सी मूवमेंट मिल रही होती है तो इस एंगल के साथ आपको अपनी लाइन जो है उस पर काफी कंट्रोल रखना होता है नए बॉल के साथ। और अभी भी ये 7वां ओवर चल रहा है तो ये नया बॉल ही कंसीडर होगा। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा इन यंग फास्ट बॉलर्स को देख के और जिस तरह हेयर बैंड वगैरह तैयारियों के साथ एग्रेशन दिखाई दिया। रनअप देखें आप, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शानदार। इस बार गैप हासिल करने में कामयाब हुई गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन हासिल हुए यहाँ कैप्टन मिकी और साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 को। ये टिपिकल मीका पंच था, थोड़ी सी उनको विड्थ मिली जिसका भरपूर फायदा उठाया और बैकफुट पर हल्का सा पंच किया और गैप हासिल करने में कामयाब हुई, जिसकी वजह से उनको आसानी के साथ जो है वो 4 रन मिल गए। यकीनन कॉन्फिडेंस बूस्टर है अपनी इनिंग्स का, बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में यहाँ पे आगाज कर चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं रीप्ले में, बहुत ही शानदार अंदाज से कॉन्फिडेंटली गाइड किया थर्ड मैन की जानिब और 4 रन हासिल किए कैप्टन ने।
वेल बोल्ड महानूर, और इस बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अक्सर कंपैरेटिवली बेटर फील्डर हैं रिवाज। हमारे स्पॉन्सर्स आपके बॉटम ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हैं। 7 ओवर्स के बाद जनूबी अफ्रीकन टीम 41 2 विकेट्स के नुकसान पर। एयरसेल, स्पार्को पेंट्स, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं और खासकर यंगस्टर्स की तरक्की में बड़ा रोल प्ले करते हैं तमाम स्पॉन्सर्स। यहाँ इसमें कोई शुबा नहीं, कोई भी इवेंट हो, सीरीज हो, उसको कामयाब बनाने में स्पॉन्सर्स का एक की रोल होता है और यही हम देख रहे हैं हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं। और ये माहम नज़ाकत जिन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की थी लास्ट मैच में, टॉप विकेट टेकर्स हैं, वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स। शी हैज टेकन 6 विकेट्स, 6 आउट कर चुकी हैं अब तक सीरीज में। वेरी वेल बोल्ड माहम, बड़ी जगह पे आके गेंद की। स्पार्क नजर आ रहे इन बच्चियों के अंदर और खासकर साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ ये अच्छी फाइट करते हैं। हार और जीत अपनी जगह पर है, ये मुकाबला कैसा कर रही हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेल बोल्ड वंस अगेन माहम। जी हाँ, इस लेवल पे जो फाइटिंग स्पिरिट देखा है दोनों साइड्स की जानिब से वो बड़ा काबिल दीद रहा है अब तक इस सीरीज में। और माहम की जो आर्म बॉल है जो पढ़कर तेजी से अंदर को आती है वो इनकी स्टॉक बॉल है। इस बार फुल टॉस हुई गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया शदरिया ने। ये आखिरी विकेट रेंसबर्ग की, बहुत ही उम्दा कैच, लो इन फ्रंट ऑफ हर आईज, ग्लासेस के साथ, लेकिन कोई मसला नहीं था। बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। कैच पकड़ना चाहिए चाहे ग्लास पहने या नहीं पहने। अब तक बड़ा अच्छा ओवर माहम का, बड़ी जगह पे गेंद की है उन्होंने। एक ही फुल टॉस गेंद की थी जिस पर ऑन साइड की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया, वरना अब तक अप टू दी मार्क है माहम। तेजी करना होगी और तेजी के साथ रन कंप्लीट किया। अर्जेंसी भी देखने को मिल रही है, लेकिन आज जो फाइटिंग स्पिरिट पाकिस्तानी गर्ल्स का अब तक नजर आया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। पेप्सी, वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, वेरी वेल बोल्ड माहम। अच्छा ओवर माहम का जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने दिए और बड़ी जगह पे गेंद की। अब तक 5.50 की रन रेट से 8 ओवर के इख्तिताम पर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका अंडर 19 ने स्कोर किए। इस मैच में प्रेशर पाकिस्तान टीम पर है, पाकिस्तान विमेंस पर है और ये बड़ा क्रूशल मौका होता है कि जब टीम अपने आप को बैलेंस करती है प्रेशर से निकलकर। और हम उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान अंडर 19 ये बॉलिंग कार्ड एक रोजीना और महानूर ने विकेट हासिल की और दोनों का इकॉनमी भी आप देखेंगे तो 6.33 एंड 7.50, नॉट बैड। जी हाँ बिल्कुल, T20 क्रिकेट के हवाले से एक्सेप्टेबल इकॉनमी दोनों की, और जेब और महम की इकॉनमी तो एक्सेप्शनल है। कम बैक्स की वजह से पाकिस्तान मेंस क्रिकेट हो या विमेन क्रिकेट हो बड़ी मशहूर हैं। आजकल जरा मुश्किल से हो रहा है, लेकिन जब कम बैक करती है हमारी क्रिकेट तो बहुत ही स्ट्रांग करती है। इंशाल्लाह जल्द करेगी हर शोबे में इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल सही बात आपने की नसीम भाई। और एक वक्त था, ये एक बार फिर से आप देख सकते हैं रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स, अर्जेंसी दिखाई और तेजी के साथ जो है वो अच्छी टेक्निक आप देख सकते हैं। विकेट कीपर एंड पर जो बैटर गई उन्होंने अपना बैट जो है वो ड्रैग किया। अच्छी चीज ये कि एक रन के लिए फाइट कर रही है। जिस तरीके से बॉलर और विकेट कीपर के हमने एक्शन देखे थे, वो जिस तरीके से उनकी इंटेंट दिखाई दे रही थी उस 1 रन को बचाने के लिए, ये फाइट दरकार है। एक रन के लिए लड़ना है।
यहाँ पाकिस्तानी फाइटिंग स्पिरिट की बात कर रहा था मैं, तो मशहूर कमेंटेटर हर्षा बोगले कहा करते थे एक वक्त में कि यू राइट देम ऑफ, पुश देम इन अ कॉर्नर एंड दे विल प्ले वाओ क्रिकेट। अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया। अब तक बड़ी सेंसिबल अप्रोच रही है इवन साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम की भी कि विकेट्स उन्होंने अपने साथ रखे हुए और अपनी बारी को लेके चल रहे हैं। हम 90 ओवर में ज़रूर है, अब तक 50 रन भी बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन विकेट्स उनके साथ हैं और दोनों आप देखें कि तकरीबन रन बॉल खेल रही हैं और इनिंग को लेके चल रही हैं। स्लैप ड्राइव किया इस मरतबा, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, बड़ी फुल लेंथ पर बॉल कर रही हैं और प्रेडोमिनेटली मोस्टली हमने देखा है कि इनकी लेंथ जो है पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म पेसर्स की वो बहुत ज़्यादा आगे रही है, क्योंकि समझती हैं कि इनको एक्स्ट्रा जो स्टीप बाउंस है वो नहीं मिलेगा। ये लास्ट बॉल आप देख सकते हैं, इट वाज फुल टॉस आउटसाइड द ऑफ स्टंप और उसको ड्राइव किया था 1 रन के लिए। अच्छा है, आगे आगे बॉल पिच कर रही हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लेफ्ट आर्म सीमर्स के लिए, पेसर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आगे से जब गेंद हिलता है तो बैट्समैन के लिए डिफिकल्टी होती है और फिर इस एज के अंदर अगर आगे गेंद करेंगी तो इनको यॉर्कर लेंथ पे गेंद करने में बड़ी मदद मिलेगी, इसकी प्रैक्टिस हासिल होती जाएगी। जी हाँ, और डेथ ओवर्स में खास तौर पर आपको बहुत मदद देती है वो लेंथ। बहुत अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग है पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 की जानिब से। अब तक कंटेन करके रखा है साउथ अफ्रीका को। जी हाँ नसीम भाई, जो बात मैंने इन पेसर्स में नोट की है अब तक, शुरू के ओवर्स में बहुत इफेक्टिव रही हैं, लेकिन आखिरी जो 5 ओवर्स जो डेथ ओवर्स होते हैं वहाँ पे वेरिएशन जो है उसका इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिला है और जो ही किसी बैटर ने चार्ज करना स्टार्ट किया है तो इनके हाथ पैर फूले हुए दिखाई दिए हैं। उस चीज़ पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। साउथ अफ्रीका अंडर 19 इसी गेम प्लान के साथ खेल रहे हैं और उन्हें पता है कि जो पैनिक बटन दबता है लास्ट के ओवर्स में उसको कंट्रोल करना होगा। अब 3 मैच हो चुके हैं, चौथे मैच में जाके अपनी नर्व्स को काबू करना होगा और वो जो लास्ट 5 ओवर्स है उनको उतना ही अच्छा डिलीवर करना होगा। आपको सीरीज में रहना है, आपने मुकाबला करना है। और देखें ये गेम प्लान हमने साउथ अफ्रीका का देखा, वो अपनी विकेट्स बचा के जा रहे हैं। जो आपने अभी पैनिक बटन की बात की, तो वो पैनिक बटन जो है वो उन्हें पता है कि जो आखिर में दबेगा तो हमारी विकेट्स होंगी तो हम फायदा उठा सकते हैं। इस गेम प्लान को जरूर नजर में रखना चाहिए। माहम बदस्तूर अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगी। बैकफुट पर जाते हुए खेली, खींचकर बॉलिंग कर रही हैं, जो कि अच्छा साइन भी है। इवन अगर आपको विकेट नहीं मिलती तो आपके अगेंस्ट इस लाइन और लेंथ पे स्कोर करना आसान नहीं होता। इस बार देखना होगा, फील्डर से थोड़ा सा आगे गेंद ड्रॉप कर गया, वरना ये तीसरा चांस मिल गया था पाकिस्तान को विकेट हासिल करने का। और इस बार ओवर थ्रो का रन, इसको जरा कंट्रोल करने की जरूरत है, बैकअप होना चाहिए प्रॉपर। या ये स्लॉपी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिली पाकिस्तानी गर्ल्स की जानिब से, ये आप रिप्ले में देख सकते हैं। काफी देर हवा में बॉल थी, कैच की ट्राई कर सकती थी, शी कुड हैव डाइव करके उसको एक कैच में तब्दील कर सकती थी, लेकिन शी वाज़न्ट अप टू द मार्क। 2 कैच इन्होंने ऑलरेडी लिए हुए और ये लर्निंग प्रोसेस होगा उनका कि मैं आगे डाइव कर सकती थी, और ये सीख रही हैं बच्चियां, आगे बहुत फायदा पहुंचा सकती हैं। अभी श्रीलंका में आपकी टीम मौजूद है, इसमें तो बहुत सारी प्लेयर्स अच्छी दिखाई दे रही हैं, वहां जरूरत पड़ी तो यहां से जा सकती हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी नेशनल साइड जो है वो श्रीलंका पहुंच चुकी हुई है, जहां पे उन्होंने 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। पहला वनडे कल है। वेल बोल्ड माहम, दोनों स्पिनर्स हमारी बड़ी अच्छी गेंद करती हुई दिखाई दी, एज वेल एज हमारे तीनों सीमर्स ने बड़ी अच्छी गेंदें की हैं। वक्त के साथ साथ लर्न करेंगी, इनका पेस भी बढ़ेगा, वेरिएशन है इन स्पिनर्स के पास भी और आपके पेसर्स के पास भी अंडर 19 की सतह पे। वेरी गुड साइन।
इस बॉल को स्क्वर्ट करते हुए खेली, शॉर्ट थर्ड पर फील्डर मौजूद थी, सिर्फ एक रन मिला। ये जो गुफ्तगू भी सुनने को मिलती है माइक के थ्रू, वो भी बड़ा मजेदार होती है। और ये रन रुकना चाहिए था, वो बात सही कह रही हैं कि थोड़ा सा बॉल पे तेज आते तो। वेरी वेल बोल्ड, बड़ी जगह से गेंद स्पिन हुई और बीट किया यहाँ माहम ने। इसके साथ आधे ओवर मुकम्मल हो गए साउथ अफ्रीका अंडर 19-11 के 53 फॉर 2 और इसके साथ ड्रिंक ब्रेक। Back live after the much needed drinks break. 53 for 2 after the first 10 overs. Ideally, the home team would have loved to get few more wickets, and it's not that they didn't have those opportunities. Some of those shots just going over the fielder's head otherwise could have been much better. We talk about the situation they are in. The captain is out there, Mieke van Voorst. Flick that one away towards deep backward square. Yeah, I would say Pakistan has done really well. Besides the 3 chances that you just mentioned, which went over the head of the fielders, but still they've kept them in control. 54 for 2 in 10 overs, you would say Pakistan have done really well. They've taken 2 wickets. And they've got Sherbano's after this, 2 overs to go for her. Maham also, she's got a couple of overs to go. Heaves that one towards deep mid wicket, long on region, running the first hard, wants to come back for the second.
They'll get there easily. Yeah, for South Africa, probably it's time for Shreya to get going. She's been there for 24 deliveries, scored just 20 runs. She came as an opener, and probably the coach would be thinking, and in that mid-break, the drinks break, probably the message would be that Shreya now needs to get going and needs to hit some big hits, get that momentum towards you, and then Mieke and Denali to come. Standing tall and just carving that one towards long off. Yep, she didn't appear in the first couple of matches, Shreya, but she did play a bit of a cameo in the previous match. Came out to open the innings today and has been here since 25 deliveries, just like you mentioned. But it's important that the captain also performs well. She was simply unbelievable in the previous match. I think the role is defined, that the captain, Mieke van Voorst, she'll play till the end. Because remember, in the previous game, she was just brilliant, taking the inning deep, and then in the last few overs, she just had a blast. And now probably it's time for Shreya to get going and get some quick runs for her team, get that momentum. Because surely the momentum at the moment is towards Pakistan. They need to shift it somehow. Giving herself a bit of room and pulling that one in the gap. There is no one out there in the deep. Shreya will get a boundary she was after, and finally breaking the shackles. Yeah, that seems to be the idea. She's forced that one. Have a look at this. She just forced it, not the ideal of the way, but she will take those 4 runs. Pakistan need to think ahead of her, maybe have that fielder mid-wicket deep, because she's looking to go towards that onside. Changing the angle now, Sheherbano. Hits it in the air and over the bowler's head. Is it going to be 2 in 2? It is. Much more in control of that shot, Shreya. Straight down the ground is always a brilliant spot to get a boundary at. Yeah, lovely placement. There were 2 fielders. She played it right in between the two, although she did well diving around, but still could not manage it. 11 done. It's 66 for 2. Spinners have controlled the proceedings for the girls in green. She's been a really good action if we talk about Maham. Usually when she comes wider of the crease and looks to bring the ball back in, always a very handy left arm spinner. Sparko Paints, the proud sponsor for this Under-19 Women's T20 International Series. Yeah, no wonder she's so good. She comes from the land of spinners. She comes from Faisalabad. Sadia Iqbal, the left arm spinner for Pakistan women's side, main side. She's from Faisalabad. Saeed Ajmal from Faisalabad. Zulfikar Babar also played from the same region, although he's from Okada, but played in that region. So you can tell it's there in her blood, being a spinner and being a good spinner. That's more important. If we talk about recent times, especially in T20 cricket, left-arm spinners, left-arm orthodox have really played a very handy role. Talk about domestic or international cricket. Well, they always have, haven't they? They've always been considered at run-stopping spinners, you can say. They may not look very impressive as far as the wickets column is concerned, but certainly this do stop the runs. Yeah, highest wickets already. Look at her. She's amongst the wickets too. 6 wickets. Nazakat, definitely the most impressive spinner of the series from both sides. Yep, she has been tasting success in all those previous matches. Hits that one hard, but she did well. Was able to stop that with her left boot. Didn't allow that single to be taken. It's all about the attitude. I think she has a brilliant attitude towards the game.
always willing to give up 100%, always just involved in the game. That's what you want to see from the youngsters. Lighting that one up once again, dragging that from outside the off stump to get a single down at long on. Good over this from Maham. He's continuing to be really economical here today for the girls. 12 down, it's 68 for 2. Yeah, like the captain, Fizza Fiaz, being proactive rather than reactive. She quickly understands that Shreya is comfortable against the pace. So she's brought back her other spinner. There she is. So that's sign of a very good captain, very thinking captain. Rosina is back for her last over though. Hits that one in the air. Now it's an opportunity and a really good catch. Wonderfully held this from Manur. Is that the moment they were after? Spectacular, unbelievable. Brilliant catching throughout the series for Pakistan girls. Another example of it. Very courageous. Yeah, you could just feel that she's going to go after the spinners, and she was never confident against the spinners. Shreya, very good change by the captain. She played it all right, but straight, not quite straight, but still the effort. Wonderful. Rosina must take her out for a dinner for taking such a fantastic catch. Manu, the fielder. Shreya goes scoring 30 of 30. Yeah, you were just mentioning about how she has been spot on making her decisions. As soon as she brought Rosina back into bowling attack into her last over, she delivers for the captain. Mari is the new batter in for South Africa. Decent runs under her belt as well. It's really surprising to see, although if we talk about the local home team, they just got a couple of spin options, but if you talk about South African girls, they've got plenty of spin options available. Yeah, that's a good run. Pakistan do have another few options, but they're on the bench. But because Pakistan seamers have been brilliant, talk about brilliance. This is pure class. Fielding of the highest order, keeping her eyes on the ball, not scared to dive in front. They're always very difficult when you have to dive in front. And at a very important point when, oh no, what happened there? There is a chance, surely a chance, surely a chance. Umpire Mukeed will definitely go to the third umpire. Yeah, as they say, never run on the misfield. The decision has been referred upstairs, although Mieke looks very confident, but this could be touch and go. She might let that ball go in the first attempt, but she was quick enough to realize that there was still an opportunity to get a better run out at the striker's end. It was a good throw, not far away from the stumps, at decent height. Was Komal able to disturb the stumps at the right time? I just get the feeling the bat turned and it was in the air by the time Komal was able to take the bails off, and this can be really interesting.
There you see, this has been a brilliant passage of play for Pakistani girls. A misfield, but still they were able to get a wicket on a run out, and it's the big wicket of the skipper. Mieke, who was looking to get settled, unfortunately will be walking back to the dugout, and this has been brilliant from the Pakistani girls. Nah, she will be disappointed. She did all the hard work, was there for 16 deliveries, and then running herself out. Although the bat was inside the line, but was in the air. And once it doesn't touch the crease, you're always out. She would be disappointed, you could tell by the face. She scored 14. It's 69 for 4 now. Beg your pardon, 70 for 4. Two brilliant fielding efforts, bringing a couple of wickets for the Pakistani girls. Turning out to be a lucky charm, Rosina, in this match. Choice walks in at number 6. So after losing 2 back-to-back wickets, they will have to do the rebuilding job all over again. South African girls, and that is the moment where Pakistan can just further derail them and put them on the back foot. Yeah, how many times we've seen a decision just changing the course of the game. First decision from Fizza Fiaz, bringing back Rosina, and then the captain deciding to come back for the second. Brilliant, absolutely brilliant from Rosina as she ends her quota. 2 for 21 in her 4 over. 13 gone, 70 for 4. Into her last over now, Maham Nazakat, top wicket taker in this series with 6 scalps. Square leg is up, there is deep mid wicket and long on in place for the right-hander. Starts off with a beauty. That's a different angle and a difficult one which the left arm spinner usually generates. They're coming around the wicket. South Africans have been losing a lot of wickets in this series, courtesy of run-outs. We saw a couple of them in the first match, and moments ago we saw the captain losing her wicket at the strike is in. And for that, you'll have to give credit to the way the fielders have responded. Yeah, lots of credit to the fielding side. Down the legs had a bit of an appeal. Not given as a wide, so might have brushed through something. Yeah, talk about fielding. Javeria Rauf, the former Pakistan international. She is the fielding coach for these young girls. Must be a very proud coach. Looking at this effort of the girls. The only concern that is left is the ground fielding sometimes. Otherwise, the catching have been brilliant. The throws have been good. The direct hits have been excellent. And remember, it's Al Batal production for PCB. It's been excellent. Pulls that one.
And they've got protection out there in the team. Will they look to come back for the second this time? I'm pretty sure they won't. Looking at the way the spinners have bowled, I mean, talking about Rosina and Mahama, I won't be surprised if they can give an over or two to Zulfisha Ayaz as well, because she was practicing just before the start of this game. Nicely driven. Really nicely placed as well. And just when we were mentioning Zulfisha, she tried her best to stop that one, but couldn't do it in the process. And she gets a boundary, does Mari. Good way to win the over this from the visitors. 14 done, it's 76 for 4. I guess you're talking to the captain. She heard you. She's brought Zulfisha for the first time that I believe that I'm seeing a ball, at least in the last couple of matches that I've covered. And I hear that she's a good all-round cricketer, also from Wakent. Decent start this, especially if you're bowling for the first time in this series. But yeah, I mean, Fizza Fiaz, up till now, she hasn't set a foot wrong. Picking up wickets, making regular changes, and adjusting to the conditions well. That's the key. And you got to give a lot of credit to Mohammad Masroor, who's the head coach of these young girls. He's a very smart operator who's been around with big teams. As we mentioned earlier, he's been with Karachi Kings and different domestic teams. A very smart man to have around these young girls. We saw in the third match, or it was the second match, when they came up with a different plan. I think that had Masroor written all over it. It was his plan, his thought process. So yes, these girls are executing it. The plan seems to be come by Masroor, who's their head coach and who's a very sharp man. So it's a job well done by Masroor. Well, another fumble will allow them to get a single. Maybe that's one department where they have to tighten up their screws a bit. The catching has been brilliant. Throws have been hitting those stumps on regular intervals. When we talk about stopping the singles, that's where they'll have to spend some more time with their coaching staff. Yeah, they'll get better with time. Once you start playing with bigger opponents, bigger sides, the matches start televising, start broadcasting. Then for your own good, you need to improve. Because fielding is one aspect that you need to love to improve. And the fitness goes with it, the strength goes with it. Big shot attempted, but to no avail. Quiet start this for Zulfisha. Just 3 singles coming off it. 15 done. The visitors are now 79 for 4. And with that, it's time for a change in the comment box. It's going to be Falak Sher Malik alongside Naseem Rajput to take you till the end of this innings. Thank you, Zishan and Ali. प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 105 है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी गर्ल्स जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अब तक। और ये कराची की गर्ल्स हमारी जर्नलिस्ट नूरिश भी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और ये दोनों बहुत ही मेहनती हमारी जर्नलिस्ट हैं। जी हाँ, अरीशा एंड नूरिश जो हैं वो एक उभरती हुई जर्नलिस्ट्स हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कराची से इनका ताल्लुक। और ज़ेब जो हैं वो अटैक पर आई हैं अपना तीसरा ओवर करने के लिए। इकोनॉमिकल रही हैं, 7 रन्स दिए हैं महज 2 ओवर्स में। क्रूशियल ओवर्स आ गए जिसकी आप बात कर रहे थे, यहाँ कैसे कंटेन करती हैं ज़ेब
और बाकी हमारी बॉलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस बार अच्छी गेंद थी, आउटसाइड एज लगा, विकेट कीपर के लिए भी कोई मौका नहीं था। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गई। 4 कीमती रन साउथ अफ्रीका अंडर 19 को हासिल हुए। जी हाँ, बड़ी अशद जरूरत थी इस बाउंड्री की। आइडियल वे नहीं था बाउंड्री हासिल करने का, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है उनको ये रन्स चाहिए, किसी भी सूरत में हासिल हों। बाहरी किनारा लगा था और विकेट कीपर की पहुंच से दूर आउटसाइड द ऑफ स्टंप विड्थ दी थी, जिसकी वजह से 4 रन्स कंसीड किए ज़ेब ने। अच्छी गेंद पे 4 रन, थोड़ी अनलकी रही थी ज़ेब, और एक मरतबा फिर स्ट्रॉन्ग कमबैक ज़ेब का। जी हाँ, ऐसी वजह से जानी जाती हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जो हैं वो पैपर करती हैं बैटर्स को। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, फुल लेंथ बॉल थी और ड्राइव करने गई, लेकिन एंगल के साथ गेंद मजीद बाहर की जानब गई, जिसकी वजह से बीट हुई बैटर जॉयस। हमारी तीनों लेफ्ट आर्म सीमर्स जो है, और ये सपोर्टिंग एरिया हमारी वुमेन्स टीम के लिए। और इस बार बोल्ड कर दिया ज़ैब ने, लेग स्टंप के बाहर से गेंद थोड़ी सी अंदर की जाने भाई, और बोल्ड किया। खुद ज़ेब भी हैरान है कि ये मैंने कैसी विकेट हासिल की। जी हाँ, बिल्कुल, एट टाइम्स ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और कुछ ऐसा ही हुआ। ज़ेब खुद भी हैरान रही और बैटर को भी शशदर कर दिया था, और उनको राउंड द लेग्स जॉयस को जो है वो बोल्ड कर दिया। और इस मरतबा जो है एक और विकेट का खसारा यहाँ पे जनूबी अफ्रीकन इनिंग्स जो है वो बदस्तूर लड़खड़ाती हुई। फेयर बॉल और एक अच्छी विकेट यहाँ ज़ेब ने दिलाई पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 को। और खासकर पाकिस्तान ने जो विकेट्स का कॉलम है ये भी अब कंट्रोल में रखा हुआ है, तो ये लास्ट ओवर्स पाकिस्तान को अच्छे करने और सीरीज में रहना है। रिथेबल जॉयस 7 रन बनाकर आउट हुई, 10 गेंदों का सामना किया। इस तरह ये 5वां नुकसान साउथ अफ्रीका को उठाना पड़ा जॉयस की सूरत में। और इस वक्त जॉय चल रहा है पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 का। हमारी नई आने वाली बल्लेबाज हैं जो कि गुज़िश्ता इनिंग्स में ओपनिंग भी करती रही हैं। आज उनके बैटिंग ऑर्डर को तब्दील किया है कप्तान ने, और एक डिफरेंट जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होगी। मिया लेलर, बेग योर पार्डन। लेकिन इनकी तो 19 रन अब तक इन्होंने स्कोर किए हैं 4 मैचेस के अंदर। कोई हमने स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इस वक्त साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम को उनके साथ है। अच्छी बॉलिंग, और मैं जो बात कर रहा था कि आगे लेंथ पर गेंद कर रही हैं, अभी अंडर 19 एज में कर रही हैं, वक्त के साथ साथ इनका पेस बढ़ेगा। और ख़ास तौर पे मैंने ज़ेब को तो देखा कि यॉर्कर लेंथ पे भी उन्होंने गेंद की है, तो वेरी वेल बोल्ड। और ये ऑन साइड से जो बोल्ड हुई थी, ये विकेट शेन वॉर्न का गेंद अंदर आता था, और बासित अली भी बोल्ड हुए थे एक मरतबा इसी तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अमेजिंग डिसमिसल होती है। और आशीष नेहरा की गेंद पर तौफीक उमर भी इसी फैशन में बोल्ड हुए थे 2004 की सीरीज में। लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया अब तक। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, फील्डिंग और एंथुजियाज्म जो दिखाई दिया पाकिस्तान वुमेन्स टीम का, वो बहुत ही शानदार। कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान टीम, लेकिन इसके लिए अच्छी बैटिंग भी करना होगी, क्योंकि प्रेशर ये है कि हम एक मैच के डेफिसिट में। मारी जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, जिनकी मैं बात कर रहा था गुज़िश्ता इनिंग्स के हवाले से। कवर की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया, और 16 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 86 5 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19।
एक मरतबा फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 ने, और इस बार उनका ये फैसला अब तक अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हुआ। 5.38 के रन रेट से उन्होंने 86 रन 16 ओवर में मुकम्मल किए। आधी टीम उनकी पवेलियन वापस जा चुकी है। अगले 4 ओवर्स में कितने रन स्कोर करते हैं ये बहुत, और ये हाइट अच्छी है, जगह पे गेंद डिलीवर कर रही है। थोड़ा सा वेवर्ड हुई है तो उस पर रन्स भी इनको लगे शुरू में, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है डेथ ओवर्स में खास तौर पे राउंड द विकेट आके गेंद करना, और इसी तरह एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। ये रन रुकना चाहिए था, वैसे करीब थी फील्डर। जी हाँ, कहीं ना कहीं खुद को मुश्किल में ज़रूर डाला हुआ है इस एंगल के साथ परसिस्टेंट रहकर महानूर ने, लेकिन इनको खुद पे भरोसा है कि वो इस एंगल के साथ जो है वो एक्यूरेट बॉलिंग कर सकती हैं। आसान नहीं होता। इनसे इंटरव्यू करेंगे ना तो ये यही बताएंगे मैं वसीम अकरम से बहुत मुतासिर हूँ, क्योंकि उसी तरीके से राउंड द विकेट आके लंबे कदमों के साथ गेंद कर रही हैं। जी हाँ, लेकिन ग्रेट वसीम अकरम जो हैं वो मोस्टली डेथ ओवर्स में जो है वो राउंड द स्टंप्स राइट हैंडर्स के अगेंस्ट आते थे। शुरू के ओवर्स में तो वो कन्वेंशनल एंगल जो है ओवर द स्टंप्स उसी पे इंसिस्ट किया करते थे, और वसीम अकरम जैसा अजीम बॉलर तो शायद दुनिया में बहुत मुश्किल है। जब आप रुक गए, इसमें रुकना नहीं चाहिए, वो हमारा ब्रांड, और दुनिया ने ऐसा बॉलर मैंने तो नहीं देखा भाई। वो तो मर्जी से ये रन अप की जो हम बात कह रहे हैं राउंड द विकेट आके, और राउंड द विकेट से जो उन्होंने, और इस बार आउटसाइड एज लगा, एक और लकी बाउंड्री यहाँ साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 को हासिल हुई है। 2 लास्ट चौके, दोनों लकी चौके हासिल हुए अब तक। जी हाँ, थोड़ी सी रब ऑफ द ग्रीन जो है वो शिफ्ट होते हुए विजिटर्स के हक में यहाँ पे पिछले 5 मिनट के खेल में। अब तक जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उनका पल्ला भारी रहा है, लेकिन ये फुल टॉस आउटसाइड द ऑफ स्टंप विड्थ भी दी थी, जिसकी वजह से आउटसाइड एज की बदौलत एक चौका हासिल हुआ। इस बार कवर की जानिब खेला है और फील्डर वहां मौजूद, इस दौरान में 2 रन जरूर दोनों बैटर्स हासिल कर लेंगे, क्योंकि कवर पे खड़ी फील्डर को थोड़ा दौड़ के जाना पड़ा था। से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने एक ही बात जो है उसको दोहराया कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है जनवरी में बांग्लादेश और नेपाल में, हम उसकी तैयारी के लिए जो है वो पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन से वाकिफ होने के लिए ये सारी सीरीज की जो गेम प्लान है या स्कीम ऑफ थिंग्स जो है उसको आगे बढ़ा रही हैं। हार जीत से ज्यादा इस तरह की सीरीज
अपने प्लेयर्स को चेक करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहां पर हमने खुद को प्रूव करना होता है और हम कैसा खेल के दिखाते हैं, किस कंडीशन में खेलते हैं, यहाँ दिखाना है। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, और बहुत ही आसान कैच ड्रॉप किया यहाँ, और लकी रही यहाँ पे मिया कि बहुत ही हाथों का कैच अनफॉर्चुनेट रहा जैब के लिए, पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 के लिए। ये कैच लेना चाहिए था, बहुत आसान था। ये बॉडी लैंग्वेज जो हम बात कर रहे थे कि आखिरी ओवर्स में, ये ऑलमोस्ट एक्शन रीप्ले था उस कैच का जो पिछले मैच की पहली विकेट के दौरान इन्होंने हासिल किया था, लेकिन इस बार जो है वो कैच छोड़ा अक्सा ने। फुल बॉल, ये लेंथ बड़ी अहम होती है लास्ट ओवर्स में। जेब ने यॉर्कर लेंथ पे गेंद की है, इनकी गेंद को जोर लगा के आगे की जाने पुश कर रही है इस एज के अंदर। बॉलिंग तो हम देख ही रहे हैं जेब की, लेकिन जीशान क्या बात करते हैं। इट्स ओवर टू यू जीशान। ऑलराइट, सो इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ साइड लाइन्स पे, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की उभरती हुई ऑफ स्पिनर मेमूना खालिद। मेमूना, किस तरह दिखा है इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को कि साउथ अफ्रीका की एक स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई और 5 मैच T20 इंटरनेशनल की सीरीज खेल रही है? अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे पहले इतने ज़्यादा नहीं होते थे मैचेस वगैरह, लेकिन रिसेंट लाइक ये जो आखिरी साल गया हमारा, हमने बांग्लादेश की सीरीज़ की, उससे पहले हमारे कैंप्स लगे, ऐसे अभी ये अंडर लाइट हमारी पहले इन कह ले सीरीज़ हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स खेलना ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमारे लिए तो एक बहुत अच्छा चांस था कि हम अपने आप को प्रूव भी करें और अपने जो स्किल्स हैं उनको और अपग्रेड करें। नमूना, कोचिंग पैनल पे अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी बड़े नाम मौजूद हैं, काफ़ी मेहनत करते हुए भी आपके साथ नज़र आते हैं, तो कोई ख़ास मैसेज देते हैं जब आप हार जाती हैं मैच? क्योंकि हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, बट क्योंकि अनदर विकेट हैज़ गॉन डाउन, सो इट्स टाइम टू गो बैक टू द कॉम बॉक्स। जीशान, वाकई पाकिस्तान ने छठी कामयाबी हासिल कर ली है यहाँ, और इस बार अपने पेस को थोड़ा सा स्लो किया था जिसकी वजह से डिसीव हुई यहाँ मिया, और पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट। अब तक 100 रन हमने बोर्ड पे नहीं देखे और 18वां ओवर खत्म होने जा रहा है। वेल प्लेड पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19। चेक कर रहे हैं, मेरे ख्याल है थर्ड अंपायर शायद फ्रंट लाइन। यस, इट्स क्लियर। फॉक्स करने में कामयाब हुई थी और वो थोड़ी इन बिटवीन पोजीशन में थी मिया के स्ट्रोक फुल ब्लडेड खेलें या बाद में रुक जाएं, लेकिन इन दी एंड पेस में तब्दीली की वजह से जो है वो फॉक्स हुई और एक आसान कैच पकड़कर उनकी इनिंग्स का खात्मा किया। छठी विकेट जो है वो साउथ अफ्रीकन गर्ल्स की गिर चुकी है। इम्प्रूवमेंट हर मैच के साथ पाकिस्तान यंगस्टर्स में दिखाई दिए, और ख़ास तौर पे इस मैच के अंदर डेथ ओवर्स में जिस तरीके से उन्होंने अपनी नर्व्स को काबू में रखा और अब तक रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। ये आखिरी 2.1 ओवर्स जो है इसको किस तरीके से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें यूटिलाइज करती हैं, ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल, ये जो आखिरी 13 लीगल गेंदें बाकी हैं ये फैसला करेंगी कि ये इनिंग्स कहाँ जाती है। जाय ली फिल नए आने वाली बैटर। अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर जैब की। इस ओवर में मिलनी तो उन्हें 2 विकेटें चाहिए थी, एक कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन एक वो फिर भी हासिल करने में कामयाब हुई। अपने 4 ओवर का केटा मुकम्मल किया 2 for 18, और इट्स ओवर टू यू जीशान खालिद। थैंक यू सो मच कॉम्स। मेमूना, उसी सवाल पे आते हैं, कोचिंग स्टाफ का क्या रोल रहता है, खास तौर पे जब अब नतीजे आपके तवक्कुआ के मुताबिक ना जाए तो? रोल आपको पता है कि इस लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस लेवल पे हम तो लाइक उतना हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, और वो चीज़ें हमें सिंपल मैसेज दिया जाता है कि आप लोग ने जो सीखा है, आपने जो प्रैक्टिसेस की हैं, जस्ट गो एंड कॉन्फिडेंट रहें उनके ऊपर और आप उन्हीं को लेके चले। आपको हर दिन इम्प्रूव करना है, ना कि आप ये कि आप कुछ एक्सेप्शनल करने जा रहे हो। जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने एक्सपीरियंस को आप
एवेलुएट करके आप उधर परफॉर्म करते जाओगे, एट द एंड जो रिजल्ट्स हैं वो आपके खुद ब खुद हाथ में आ जाएंगे। इस सीरीज़ पे अगर हम खास तौर पे नज़र डालें तो एक मैच आप अपने नाम कर चुकी हैं और अभी भी आपकी टीम एक अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी विकेट्स हासिल कर ली हैं, तो कैसे देखती हैं कि इस सीरीज़ को, स्पेशली जो T20 वर्ल्ड कप आगे आ रहा है? बिल्कुल, ये सीरीज़ हमारे लिए एक चैलेंज में थी क्योंकि एक क्वालिटी साइड है साउथ अफ्रीका और लास्ट टाइम के ये लोग फाइनल्स में भी गए हुए थे रनर अप से, तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे और अभी भी पोजीशन अच्छी है। हम लोग यही प्लान के साथ थे कि हमें ये सीरीज़ जीतनी है और हम उसी के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आज भी अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है ऑलमोस्ट और कोशिश करेंगे कि बैटिंग में भी जो हमारे प्लान्स हैं उन्हीं के ऊपर इवेलुएट करके उनको परफॉर्म करें। ऑन अ लाइटर नोट, आप काफ़ी अरसे से टीम में मौजूद है, कौन सा ऐसा टीममेट है जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है? टीममेट्स हमारे ऊपर नीचे चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन आई प्रेफर टू बी लाइक अराउंड ऑल द पीपल, क्योंकि आपको पता है टीम जेलिंग होना और उसका यूनिटी वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, खासकर इस लेवल की क्रिकेट में। तो हम लोग कोशिश करते हैं हम सभी एक दूसरे के साथ घुले मिलें और बातचीत करें। Thank you so much, Memuna, for talking to us. All the best for the remaining series. Thank you so much. That was Memuna Khalid, the off spinner of the Pakistan Under-19 girls team. It's time to head back towards the com box. थैंक यू जीशान। और मेमुना को हमने एक चीज़ देखी कि बड़ी सुलझी हुई भी दिखाई थी, जितनी ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया कि कौन सी प्लेयर के साथ आपको टाइम गुजारना अच्छा लगता है, तो उन्होंने टीम के जेल होने की बात की और उन्होंने अपनी बैटिंग की जो बात की है, तो भाई मेमुना बैटिंग भी करके दिखाओ, ये रन तो कम है लेकिन बड़े ट्रिकी हो जाते हैं कभी कभी। बिल्कुल यही क्रिकेट की खूबसूरती है और जिस किस्म की उन्होंने जो है वो मैच्योरिटी दिखाई है अपनी गुफ्तगू में, मेमुना ने इस एज में बड़ी इम्प्रेसिव नज़र आई और यही तैयारी है जो पीसीबी एंड ऑल द थिंक टैंक जो हैं वो इन लड़कियों की करवा रहे हैं और उसका फल भी जो है वो नज़र आ रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं मेमुना खालिद, हवा में खेली हैं और एक बाउंस के बाद लॉन्ग ऑन के पास एक रन और 100 रन्स बन गए हैं, जो कि साइकोलॉजिकली एक अच्छा साइन है जनूबी अफ्रीकन साइड के लिए। लेकिन जिस किस्म का पाकिस्तान ने आगाज किया था, इनिशिएटिव जो है उसको अब खोना नहीं चाहिए, आखिरी ओवर का खेल अभी बाकी है। बॉलर्स ने अपना काम कर दिया है, आप देखा जाए तो अब तक, और इस बार बोल्ड कर दिया, देख लिया था ज़ूफिशा ने कि जय बाहर आ रही हैं खेलने के लिए और इस वजह से अपनी लेंथ को थोड़ा सा खींच दिया, जिस पे डिसीव हुई जय और पाकिस्तान को 7वीं कामयाबी मिली। ये टिपिकल टेल एंडर्स स्लॉग जिसे हम कहते हैं वो खेलने गई थी और फ्रंट फुट कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़ूफिशा वेल विद इन द पॉपिंग क्रीज उनका पैर लैंड हुआ और ये देखें पढ़कर थोड़ी सी उनको मूवमेंट मिली, ऑफ ब्रेक हुई बॉल और ऑन टू द स्टंप्स और जय जो है वो आउट हुई। जय जाती हुई दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तान को 7वीं कामयाबी मिली है। 2 रन बनाए जय ने, ज़ूफिशा की गेंद पे बोल रही और जब ज़ूफिशा को लेके आई थी कैप्टन, एक ऑफ स्पिनर को आप अगर 18th ओवर दे रहे हैं तो वो 19th ओवर तो बड़ा रिस्की होता है और उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंद करके दिखाई, खासकर चेंज ऑफ पेस जो उनका था, वेरिएशन जो उनकी थी, उसने बड़ा फायदा पहुंचाया और अपने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर एक आउट किया। एक वाज़े कंट्रास्ट फर्क दिखाई देता है बॉलिंग अटैक्स में दोनों साइड्स की। पाकिस्तान के पास 3 लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, पेसर्स। शारबानो आखिरी ओवर करने के लिए आई हैं, पंच किया है डाउन द ग्राउंड, 1 ही रन मिलना चाहिए। और जबकि हम जनूबी अफ्रीका की बात अगर करें नसीम राजपूत, तो उनके पास सिर्फ एक मिया वाहिद हैं जो कि पेसर हैं, बाकी सब उनकी स्पिनर्स हैं। ये आखिरी डिसमिसल आप देख सकते हैं लास्ट ओवर में ज़ूफिशा की जानिब से, बड़ी अच्छी बॉल और ये एक वाइल्ड स्विंग थी, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी और बोल्ड हुई जाए। बॉलर्स अप टू द एक्सपेक्टेशन, फील्डर्स भी काफ़ी हद तक मोटिवेटेड दिखाई दिए और हर मैच के साथ जो हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान विमेंस अंडर-19 टीम ने बहुत कुछ लर्न किया है, वो जो आज हमने देखा भी। इस बार एक और आउट होने का खतरा, यूं एक और कामयाबी पाकिस्तान वुमेन्स अंडर-19 को हासिल हुई। वैनवेक आउट होने वाली बैटर और सहर ने ये कामयाबी दिलाई पाकिस्तान विमेंस को। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जनूबी अफ्रीकन गर्ल्स की विकेटें जो हैं वो खज़ां के पत्तों की तरह झड़ रही हैं और बदस्तूर
उनकी विकेटें गिरने का जो सिलसिला है वो जारी। इस मरतबा वैन वैक जो हैं वो आखिरी शिकार हुई महानूर की बॉलिंग का। ये आप देख सकते हैं रीप्ले में, हवा में खेली थी और आसान कैच पकड़कर नूर ने सेलिब्रेट किया और वैन वैक जो हैं वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुई एशली वैन। प्रोजेक्टेड स्कोर 108 रन दिखाई दे रहा है और इससे ज़्यादा जाने भी नहीं देना चाहिए क्योंकि आपने सीरीज़ में रहना है, प्रेशर आप पर होगा और ख़ास तौर पे जब थोड़े रन होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं, आप उसको आसान ले लेते हैं। तो आप जितने रन आपने बोर्ड पर दिए हैं, आपको पावर प्ले भी सेंसिबल खेलना चाहिए। कोई पावर प्ले में आपको 40-50 रन की ज़रूरत नहीं है, आप अकल से खेल के इस टारगेट को हासिल करें जैसी कंडीशन है। बैट्समैन बैटिंग के लिए आई हैं। इस मरतबा उनको फॉक्स तो किया था लेकिन बाल बाल बच गई। ये बॉल वापस शार बानों की जानिब भी जा सकती थी लेकिन लकी रही डीटीपी। डीटीपी एक स्पिन बॉलर हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी बॉल के साथ। ये आखिरी डिसमिसल आप देख सकते हैं एशली वैन की, एक आसान कैच मिड ऑफ पर नूर का। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर से थोड़ी दूर थी, एक रन हासिल किया। दूसरे रन के लिए बहुत तेजी करना पड़ी दोनों बैटर्स को और हासिल करने में कामयाब हुई। ये रन्स बहुत कीमती हैं, चाहे एक एक करके या दो दो करके आए। साउथ अफ्रीकन के लिए जो है वो ये बोनस रन्स ही काउंट होंगे। टेल एंडर्स क्रीज पर मौजूद हैं। लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, फील्डर वहां मौजूद, एक रन हासिल किया। थोड़ा तेज आना चाहिए क्योंकि ये ऐसा मौका है कि जहां पे बैटर्स 2 रन का चांस लेते हैं तो आखिरी ओवर्स में खास तौर पे आपको पहले रन को रोकने के लिए थोड़ी स्प्रिंट लगानी पड़ती है। वीगोटेल मोबाइल्स बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन का जरिया। लास्ट बॉल है साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 इनिंग की। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, वेरी वेल बोल्ड पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 और इस बार डायरेक्ट थ्रो लगी है। इसके भी चांसेस हैं कि ये नवी विकेट पाकिस्तान को हासिल हो जाए। ये रन रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेट अगर ये नहीं भी हासिल होती है लेकिन विकेट हासिल होने की सूरत में ही रन रुकेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये स्टंप्स को डायरेक्ट इन्होंने थ्रो तो की है लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है वो करीबी मामला होगा। थर्ड अंपायर को ये डिसीजन जो है वो रेफर किया गया है। बिल्कुल अंदर आ चुकी हैं, ज़्यादा मुश्किल डिसीजन नहीं है थर्ड अंपायर के लिए। काफ़ी पहले उन्होंने अपना बैट ग्राउंड कर दिया था। सो इसे एक रन के साथ साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 की इनिंग का इख्तिताम हुआ। 108 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर किए। वेरी वेल बोल्ड पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19। 110 रन दरकार होंगे पाकिस्तान को इस मैच में फतह के लिए और सीरीज लेवल करने के लिए। फिर उसके बाद आखिरी मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन ये रन हासिल करने होंगे तो आखिरी मैच इंटरेस्टिंग होगा। और जो आज बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी पाकिस्तान वुमेन्स की, ये करेंगे रन। जी हाँ, दूसरी इनिंग्स जो है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि 110 रन का हदफ है और साउथ अफ्रीकन्स के पास भी रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो पाकिस्तानी बैटर्स को रोक सकें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस किस्म की फाइटिंग स्पिरिट हमने आज देखा पाकिस्तानी गर्ल्स का, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बैटिंग कार्ड साउथ अफ्रीकन का, श्रिया ने 30 रन बनाए और रेंसबर्ग के 23 रन। मीका कप्तान अनलकी रही, रन आउट हुई, 14 रन बनाए और मारी ने टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो प्रोवाइड किया। रन बॉल 23 रन के साथ और बाकी कोई भी बैटर डबल फिगर में दाखिल ना हुई। 109 रन 8 विकेटें गंवाकर साउथ अफ्रीका ने बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स का डिसिप्लिन बड़ा अच्छा रहा, सिर्फ 3 एक्स्ट्रा रन दिए।
बॉलर्स में आज रोजीना ने बड़ा डोमिनेट किया, 2 आउट किए 21 रन देकर, उसके साथ साथ एक एक विकेट हासिल की मानूर, शहरबानो और जोफिशा ने जबरदस्त बॉलिंग। और जोफिशा ने ऑफिस में आखिरी में भी डेथ ओवर किया जहां पर उन्होंने सिर्फ 3 रन कंसीड किए और अपने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर एक विकेट हासिल की। तो अच्छा डेप्थ दिखाई दिया पाकिस्तान के टैलेंट में। और 70 फॉर 4 और उसके बाद या 68 फॉर 3 और पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट किया 109 पे। वेरी वेल बोल्ड पाकिस्तान विमेंस। ये इनिंग्स हाइलाइट्स इस तरह, पहला विकेट जो है वो बड़ी जल्दी गिरी साउथ अफ्रीकन की, और इनकी विकेटें गिरने का जो सिलसिला है वो इन पैचेस जो है वो जारी रहा। थोड़ा सा मोमेंटम इन बिटवीन इनको मिला जब रेंसबर्ग क्रीज पर थी, और कप्तान ने भी जो है वो अच्छे शॉट्स लगाना शुरू किए, लेकिन वो भी अनलकी रही और रन आउट हुई मैच 14 रन बनाकर। पाकिस्तानी बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है। बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ को अपनाए रखा, बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की, और कैचिंग खास तौर पे जो थी वो बड़ी इम्पैकेबल रही थ्रू आउट द सीरीज। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी गर्ल्स की कैचिंग और हिटिंग द स्टंप्स, जो इनकी थ्रोइंग थी वो काबिल दीद रही। ये खूबसूरत कैच, डाइविंग फॉरवर्ड आसान नहीं होता, लेकिन आज बड़े अच्छे कैचेस जो है वो पाकिस्तानी गर्ल्स की जानब से देखने को मिले। रन ज्यादा बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये रन बड़े ट्रिकी होते हैं। और पाकिस्तान विमेंस की तमाम फील्डर्स और खासकर हमारे ये लेफ्ट आर्म सीमर्स दोनों स्पिनर्स बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती हुई दिखाई दी। बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है पाकिस्तान, छोटी नेशन नहीं है, और हर नेशन के ऊपर कुछ अप डाउन आते हैं। पाकिस्तान बहुत इम्प्रूव करने की जानिब जा सकता है। इन यंगस्टर्स को देखकर बड़ी होप हुई। और खासकर मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें कैच लेने के बाद इम्प्रूवमेंट, और इनके कोच मोहम्मद मसरूर को भी बड़ा क्रेडिट जाएगा जो जूनियर सतह पे बहुत अच्छी कोचिंग करते हैं। बड़ा अच्छा डिसीजन पाकिस्तान के विमेंस डिपार्टमेंट का, जिसे वाब रियाज खुद लीड करें, और बहुत ही अच्छा डिसीजन, एजाइल दिखाई दी तमाम फील्डर्स। ये मैनहट्टन पे नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है इन बिटवीन ओवर्स जो है वो प्रोग्रेस रही। साउथ अफ्रीकन पहली विकेट जो है वो 17 के रन स्कोर पर गिरी, और उसके बाद विकेटें गिरने का सिलसिला जो है वो रुका ही नहीं। 110 रन की जरूरत है पाकिस्तान को 120 लीगल गेंदों पे। और इस वक्त हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, और जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी इनिंग्स देखेंगे।
Welcome back once again from National Bank Stadium here in Karachi, where Pakistani innings is about to get underway. It's fourth T20 international of the 5-match series, where they are supposed to chase down 110 runs in their allotted 20 overs, and that is largely because of the wonderful bowling efforts we witnessed in the first 20 overs of this game. Talk about the spinners, talk about the fast bowlers, they were all over the visitors. They never really allowed the South African team to gain any momentum whatsoever. Even the top scorers in the previous match were completely neutralized by the fielding efforts as well as by the bowlers. So it all depends on the girls in green, how well they bat, and will they be able to chase down these runs and level the series to put up a show for the finale that will be played on Friday. Yeah, Pakistan, I think, have a great chance of leveling the series. You said they showed no mercy with the ball, and Mia Lenore, who has been really impressive with the new ball in all the previous 3 matches. On the front foot, it's a confident start this from Komal. We've got a really good understanding between each other. Komal usually takes her time, whereas her partner Ravel is usually the aggressor in the partnership. He's got 28 runs so far in the series. Couldn't get a decent score in the previous match, but with not a lot of runs to get, I think she can afford to take her time at the crease. Yeah, she's due some runs. Yeah, Mia Lenore, she's been very impressive. Economy also 5.80 with 5 wickets in the series. See, 110 runs, it's a comfort zone as far as batting is concerned. You don't have to go berserk from the ball one. You can take your time and then look to build that momentum and build some partnership. And that's why I said somebody like Ravel, she's technically very sound. She has good temperament. If she gets going and she plays till the end, I think Pakistan should be able to chase down this total. On the front foot, still couldn't get it past extra cover. Yeah, I mean, it's that sort of a score that even if you lose back-to-back wickets, you cannot really go into that panic mode, which happens when you are chasing a big total like they were the other day. And especially with the likes of Sheher Bano, who usually comes lower down the order. She has been brilliant with the bat. So they will be feeling much more comfortable as they were in the previous match. Nicely guided. Finds the gap as well. This outfield will allow the ball to go and travel and touch the fence for the first boundary of the Pakistani innings. Yeah, very smart. Showing the game awareness. Just timing it and placing it also. It's very important, as I said earlier, that Komal gets to a good start, because she's sort of a player who can get going at a quick rate. It just timed it, and placement, amazing. Yeah, she didn't like it. No bowler likes getting hit for runs, but that was really good thinking from Komal's point of view. She was out there behind the stumps throughout the 20 overs, so she know how the pitch usually behaves. Rivaj being one of the sponsors of this bilateral T20 international series between the Pakistani girls and South Africans. Yeah, very interestingly, Zishan, South Africa have just one fielder outside the circle, and that deep third. So they understand the importance of putting pressure early on. Driven towards mid-on, it's going to be nothing at the last ball, but a good start this from the Pakistani girls. They are 4 for none after the first over.
It's an Al-Batal production for the Pakistan Cricket Board. This 5-match T20 international series between the Pakistani girls and the South African girls. It's a sign of a healthy relationship between the PCB and the South African Cricket Board as well, because if you talk about the last few years, South African girls have visited Pakistan quite often. There's definitely something in the food and in the atmosphere that they like. And the competition that our team gives them, I think that's probably the reason that they come back again and again before a big event. Ashley Van Wyk. Oh, that's nicely timed. Initially we thought it's going to be easily cut off by the fielder, but she had to travel all the way towards the fence, but still managed to pull it back. Couple of runs for Ravel, so a confident start this by her. Yeah, she surely is one for the future. I've been really impressed by Ravel, the way she bats. Very composed, technically very correct, temperament also very good. Very interestingly, her father was an off spinner. Her father was a very good off spinner. He was known for a name of Murli when he used to play club cricket and domestic cricket. Farhan Rashid. Farhan Rashid's sister is one of the umpires of Sabahat. So both aunt and her niece playing here in National Bank Stadium, Karachi. Cricket is something that runs in their blood. Never an easy job to be a part of a cricketing family, Ali. Tell me about it. Please tell me about it. It's the most toughest, in my opinion. And Ravel, the way more she plays, more eyeballs will be on her. She'll be talked about. When you associate her with her father, then that extra bit of pressure comes onto her. So you need to be better than others when you are associated with a cricketing family. She's not afraid to fly the ball up Van Wyk, but that's how she can purchase a wicket on this track. Very surprising that she missed out in the previous game, possibly due to the health reason. Vigotel Mobile, another sponsor for this T20 International Series. Short and wide, just couldn't get it through. Yeah, the point that you made earlier in the previous over, it's okay if you don't get runs quickly. You can still take your time. It's not like a big total that you're chasing. So just do not put that panic in the camp. Because South Africa are a quality side. They will come hard at you, but still you got to keep your calm and nerves cool. Goes for the sweep shot, but the impact was outside. Good start this from Van Wyk. Doesn't seem like she missed the previous match. Just a couple of runs in her first over. 2 done. It's 6 for none. She usually bowls a couple of overs with the new ball, Mia. Then she comes back towards the tip. Deep third man in place. They're surely throwing her a challenge, having mid-wicket and mid-on and fine leg inside the circle. They want her to go because we know that she likes playing that slog sweep over mid-on or mid-wicket. So far, everything has been on the front foot and towards the offside. That's why you could see plenty of fielders as well. She's keeping her calm. I tell you, I know she would be itching to go over the head of that mid-wicket fielder. Pepsi are proud partners, but that's where you differentiate from others. You can, if you can hold on to those nerves. Now they've sent back the fine leg fielder, but still she would eye that mid-wicket and mid-on area. That's where she likes to hit most of her runs. Outside edge. Oh, brilliant effort. But that has been grasped by the keeper.
Oh, that's unlucky for Mieke. She's been brilliant with her line, with her length, inviting Komal to drive. Because playing offside is not really her forte. Have a look at this. Feet not quite covered, going towards the line of the ball. Always asking for trouble if your feet are not moving as per the line of the ball. A catch dropped, a life given to Komal. She has been slightly unfortunate, to say the least. Mieke conceded a boundary in the previous over when the ball just went almost through to the fielders on the offside, and now a chance gone begging. Might have missed an opportunity, might have missed a trick by not having a fielder in the slip cordon, because you need wickets, you not have enough runs to defend. Absolutely, you make a good point. And also, in my liking, the wicketkeeper, probably she can move back a few steps, because the previous occasion when the catch came, it hurried on to her. It came to her very quickly, as if that she was not ready for it. Driven again, this time in the gap, beautifully timed and placed by Komal, and that's going to be her first boundary of the innings. Yeah, that's a reply that no bowler likes. After being dropped, that will make her furious, and you can tell she didn't like it. Yeah, she's not happy. She surely is not happy, because she's been hit for a boundary, and a very confident boundary through the gap for 4. That's a good confident comeback by Komal. She didn't like the fact that the captain was coming near to her for a suggestion. It's never a good idea going closer to a fast bowler when a catch has been dropped and she's been hit for a boundary the very next delivery. As a fast bowler, it makes you furious, because she's done all the hard work. She's been very consistent with her line and length. Then she creates that opportunity, which the wicketkeeper unable to catches, and then the batter hits you for 4. That's awful. Tight line and length from Mieke in this over. Just a boundary for Komal. 3 done, a decent and a quiet start from Pakistan. They are 10 for none. Ashley Van Wyk to continue with her leggies. Got deep mid wicket and long on in place for Ravel. Plenty of open spaces on the leg side inside the inner ring, with just square leg standing right next to the umpire. Yeah, it's important for South Africa to keep believing that one wicket can bring 2, 3, and looking at the history of Pakistan, they can lose wickets in cluster. In Pakistan, you just can never say they're in a safe position. They can always lose games after being in a winning position, so that's something that opponents always have in their mind. That's what happened in fact, the first or the second game, I believe. Yeah, I talk about Pakistan cricket, no matter if it's men's cricket or women's cricket, there is never a dull day. Have this tendency of making things interesting for the viewers and the fans. Yeah, never a dull day, but a sad day. We've seen that happen quite a lot in Pakistan cricket. Probably now we're used to it, and it should change. Especially 110 the target. Zishan, you got to be kidding me. That's the shot she likes. She has found the gap as well. One bounce and into the fence.
No matter how many fielders you place on the leg side in the deep, but Ravel will keep on finding those gaps and will keep on getting those runs. Yeah, very sensible, very smart she is. She's been waiting for the length to be in her area, in her zone. That's a sign of a good batter. When she identifies, when she pick and choose which ball to hit, which is her favorite area or the strong area, I would say. And she placed it beautifully. Sensible batting this from both these girls. But at the same time, when you're getting those boundaries, whenever the opportunity comes, you've got to go for singles as well. We saw plenty of strokes like these in the second match, where she was able to construct an innings of 68. Back live. Yeah, Pakistan do need a batter like her, especially when chasing down 100, 110, 20. Just to hold on, stick to one end, don't lose wickets from that end, and keep on playing. Whenever the ball is there, just go after her. She's that sort of a player. Oh, full toss, but well negotiated by Ravel. 6 runs in that over from the leggy. 4 done. Pakistani girls are 16 for none. Yet to lose a wicket. Pakistani girls going at 4 and over. They can afford to do that. Still, just 110 is the target. Keeping wickets in hand will be important, especially when you've got a long batting lineup and a strong lower order. Got to try something different. The T20 has been introduced, bowled really well in the previous match. Yeah, I think this will be the challenge for Pakistani batters, how they deal with the spinners. Because we've seen these pitches get slower and slower as the time progresses. And Dithipi, she bowls very smartly. She bowls it slow. And she's been one to take wickets for South Africa as far as spin department is concerned. Yeah, lots of similarities between Dithipi and Rosina from Pakistan. So she bowled beautifully. She got a couple of wickets. It's her time now, but the only thing is that Pakistan know what they're chasing, so they won't take unnecessary risk against her. They can always play her out. There she is. Second from left. She wants a quick single, a bit of a fumble, but they'll get that single eventually. Yeah, I think it was a master stroke from the management and the captain to include someone like Rosina in the playing 11 today, because she not only just bowled quiet overs, but she got a couple of wickets. And if you remember, it was her last over where they got 2 important wickets. One courtesy of a brilliant catch and then a run out that helped Pakistan to come back in the game. And from there on, the South Africans could really not recover. She looks focused. Yeah, she's taking her time. Ravel, her younger sister, I hear, is also a very good player. So let's see. We haven't seen 2 sisters play for Pakistan. Let's see if Ravel and her younger sister both can play for Pakistan. Good start this from T20. Just a single coming in her first over. 5 overs done. Pakistan needs to up the ante a bit. They are 17 for no loss. And there's going to be change in the comms, where Falak Sher Malik will be joined by Naseem Rajput for the next 5 overs.
शुक्रिया ज़ीशान खालिद और अली यूनुस। 5 ओवर्स में 17 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग अभी तक साउथ अफ्रीकन गर्ल्स की, और बड़ी मोहतात बल्लेबाजी कर रही हैं अभी तक पाकिस्तानी बैटर्स। नसीम, बिल्कुल सेंसिबल अप्रोच। हम यही बात कर रहे थे कि पावर प्ले को फोकस नहीं करना, क्योंकि बोर्ड पर आपके सामने 110 रन है। आप अपनी विकेट्स कैरी करेंगे तो उसका फायदा आगे होगा। लेकिन कोशिश करके दोनों बैटर्स को रन बॉल खेलना चाहिए, ताकि मैच अब जैसे रन रेट हम देख रहे हैं 6.27 पे इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। और जहां आपको मौका लगे फील्ड सर्कल में तो बाउंड्री भी लगाएं। 2 for 42 9 ओवर्स में अब तक इनकी इस सीरीज में बॉलिंग। या पिछले मैच में इन्होंने 2 खिलाड़ी आउट की थी। रिस्पेक्ट मबासा ने, ये भी बड़ी नपीतुली बॉलिंग करती हैं और अपनी लिमिट्स को जानती हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं चाहती। बिल्कुल ये एक टिपिकल लाइन और लेंथ पर रहती हैं, जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट स्कोर करना आसान नहीं है। सपोर्टिंग स्टाफ पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम का, और बड़े ज़बरदस्त एफर्ट इनके वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट दिखाई दी हमें। सीरीज बराबर करने का टेंशन इस वक्त चेहरों पे नुमाया। जी हाँ, बड़े फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं ये चेहरे। समझते हैं कि ये कितनी अहमियत रखता है, खास तौर पे आज का जो मुकाबला है। अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर ऑन साइड की जानिब गेंद को हिट किया कोमल ने और 4 रन हासिल किए। मच नीडेड बाउंड्री फॉर पाकिस्तान विमेंस अंडर 19। कहीं ना कहीं फील्ड सर्कल में उसका भी कुछ फायदा उठाना होगा, और बड़ी अच्छी अप्रोच है दोनों बैटर्स की। इस बार थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी जिसे पैर निकाल के ऑन साइड की जानिब हिट किया और 4 रन हासिल किए। जी हाँ, प्री मेडिटेटेड स्वीप शॉट थी और कनेक्शन भी बड़े उम्दगी के साथ उन्होंने मिडल ऑफ द बैट खेला और 4 रन हासिल किए। यकीनन कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ उस शॉट के साथ। 6 ओवर्स के इख्तिताम पर पाकिस्तान 21 बिना किसी विकेट के नुकसान के। फलक शेर, पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज विकेट्स का कॉलम है कि जहां पर अब तक पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और ये फायदा पहुंचाएगा। लेकिन चूंकि अब फील्ड खुल गई है तो अब आप बाउंड्रीज कम मारें, लेकिन कोशिश करके रन बॉल जरूर खेलें ताकि मैच ज्यादा मुश्किल ना हो। और ये हाईलाइट आपको पावर प्ले की दिखाई दी। इस बार अनलकी रही विकेट कीपर जो इस गेंद को प्रॉपर तौर पे कलेक्ट नहीं कर सकी, वरना पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। इस बार कवर की जानिब चौका और ये ऑन साइड की जानिब हिट करके 4 रन हासिल किए, और ये चौथी बाउंड्री जो अब तक पाकिस्तानी बैटर्स ने स्कोर की। डॉट बॉल ज्यादा है इसका मकसद है कि क्योंकि आप 6 ओवर खेल चुके, 4 अपने चौके लगे, तो 16 रन तो आपने बाउंड्री से हासिल की है। तो जरा सिंगल्स पे फोकस करके अपनी इनिंग को कैरी करें। जी हाँ, बिल्कुल इनको स्कोर बोर्ड जो है वो उसको बढ़ाना चाहिए। कम से कम डॉट बॉल्स खेलने की जरूरत है। क्योंकि जितनी गेंदें खाली जाएंगी वो प्रेशर जो है वो बिल्ड करेंगी, और फिर कहीं ना कहीं जाके आप बाउंड्री जो है उसकी तलाश में जाएंगी, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब आप खेलेंगी तो अपोजिशन को चांस भी देंगी। कोमल ने 22 और रवेल ने अब 16 गेंदें खेलनी है, तो अब इनको बॉल नजर आ रहा है। नए बैटर्स के ऊपर इतना प्रेशर ना हो कि वो आए और आके हिट करना पड़े। तो अगर आपने क्रीज पे इतना टाइम गुजारा है तो ये डॉट बॉल कम करना होंगी। जी हाँ, गैप नहीं हासिल कर पा रही रावेल जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी निस्बत कोमल जो है उनकी टाइमिंग जो है वो कदरे बेहतर रही है इस इनिंग्स में अब तक, लेकिन रावेल 150 भी कर चुकी हैं इस सीरीज में। बड़ी अच्छी बैटर है। इस बार सामने की जानिब हिट लगाई है, फील्डर
लॉन्ग ऑन पे खासी पीछे थी बैटर। अच्छा हुआ कि प्रॉपर टाइम नहीं कर सकी यहाँ रवेल, वरना गेंद कैरी भी कर सकती थी फील्डर तक। एक रन जरूर हासिल हुआ। सिंगल्स हासिल करें स्पार्को पेंट्स, वन ऑफ द स्पॉन्सर ऑफ दिस पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वुमेन अंडर 19 सीरीज। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी यहाँ, सीधी रही थी, थोड़ा सा ब्रेक नहीं हुई थी और इसी वजह से कोमल बीट हुई। इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वहां पे आउटसाइड एज हुआ था, विकेट कीपर कलेक्ट तो नहीं कर पाई। ये मसरूर पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 कोच और जूनियर सतह के बहुत ही शानदार कोच मसरूर। बड़ा अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ये दिखाई दिया, लेकिन इस बार पर लकी भी रही है हमारी दोनों बैटर्स, क्योंकि विकेट कीपर से एक कैच ड्रॉप हुआ था, वो इतना ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन ये बहुत ही आसान था जो चांस मिला यहाँ हमारी बैटर को। 7 ओवर मुकम्मल हुए, 24 बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान वुमेन अंडर 19। बाउंड्री पे दिखाई दिया था पाकिस्तान का सपोर्टिंग स्टाफ और वो इन बैटर्स को यही एडवाइस करता हुआ दिखाई दिया कि आप रन बॉल खेलें, बहुत ज़्यादा जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बोर्ड पे रन्स नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से आप इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं तो ये मैच मुश्किल होता चला जाएगा। आपने तकरीबन 100 नहीं बल्कि 50 की औसत से अब तक पार्टनरशिप की है, तो स्ट्राइक रेट से तो 50 का स्ट्राइक रेट, तो फिर अब थोड़ा सा इसको बढ़ाते चले जाएं। 110 रन होते हैं, 110 रन इजी होते हैं। जी हाँ, कम से कम रन बॉल होना चाहिए था और लगता है नसीम राजपूत आपकी बात उन्होंने सुन ली है। यहाँ पे रावेल ने गैप हासिल करके एक चौका जो है वो थर्ड बाउंड्री पर लगा दिया है और मच नीडेड चौका ये पाकिस्तान के लिए। मेरी बात तो नहीं सुनी, मैं तो सिंगल की बात कर रहा था लेकिन बहुत ही अच्छा चौका, बड़ा लेट खेली यहाँ पर, वेट करके शॉट खेला और शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़ी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। बिल्कुल आपने सही बात की, मच नीडेड बाउंड्री फॉर पाकिस्तान। जब पहली गेंद पर आपको चौका हासिल हो जाता है तो फिर उस ओवर को जाया नहीं करना चाहिए। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेली, ये चांस हो सकता है लेकिन फील्डर्स की पहुंच से काफी दूर डाइव लगाकर गेंद को इन प्ले फेंका और कॉमेडी ऑफ एरर्स इन दी एंड रॉन्ग एंड पे थ्रो की, वरना ये काफी खतरनाक हो सकती थी पाकिस्तान बैटर्स के लिए। खूबसूरत क्रिकेट हर जानिब से अगर आप देखें, क्योंकि एक अच्छी गेंद थी जिसको लॉन्ग ऑफ की जानिब जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से टाइम किया था। यहाँ उतनी ही अच्छी फील्डिंग जिसको अंपायर इस वक्त चेक भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि लॉन्ग ऑन पे फील्डर बाउंड्री पे मौजूद है और ये सर्कल के अंदर लॉन्ग, लेकिन काफी बाहर से गेंद रोकी। 4 रन हासिल हुए यहाँ पर और एफर्ट, हर चीज का एफर्ट, बहुत ही अच्छा शॉट, अच्छी गेंद को हिट किया और बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट। जी हाँ, गुड क्रिकेट ऑल अराउंड जो है वो देखने को मिली और इन दी एंड जो है वो चौका मिला, तो थोड़ा सा अब जो है वो एक्सेलरेटर को दबाया है यहाँ पे पाकिस्तान बैटर्स ने। रावेल ने काफी हद तक अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर ली है। एक मरतबा फिर रवेल ने कट करने की कोशिश की थी, इस बार प्रॉपर टाइम नहीं कर सकी, वहीं गली में खड़ी फील्डर के पास गेंद गई। ये वो बॉल्स हैं जिनसे ये सीरीज खेली जा रही है। जी, कोकाबुरा की ये बॉल्स ऑस्ट्रेलियन मेड, 142 ग्राम इनका वजन है। वेरी वेल प्लेड, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन फील्डर ने बहुत शानदार एफर्ट करके इस गेंद को स्लो किया, लेकिन दोनों बैटर्स के लिए मौका था कि 2 रन हासिल किए। वेल प्लेड रवेल। नसीम भाई, जो मेंस की क्रिकेट होती है उसमें बॉल का जो वजन होता है मोस्टली वो 155 ग्राम होता है और
विमेन की ये जो क्रिकेट है ख़ास तौर पर अंडर 19, इसमें 142 कदरे हल्का बॉल है। हवा में चांस है और ये एक आसान कैच पकड़कर पाकिस्तान की पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुई मबासा। इस ओवर में 2 बाउंड्रीज आपको मिल गए थे, फिर 10 रन आ गए थे। ये आखिरी बॉल थी। ये तमाम चीज़ें लर्निंग प्रोसेस है इन बच्चियों का। अच्छी बैटिंग की रवेल ने, और चूंकि उन्हें एडवाइस की गई थी कि अब थोड़ा सा आप चांस लें, तो वो ज़्यादा चांस लेने चली गई। हालांकि 2 बाउंड्रीज या 10 रन इस कंडीशन में बहुत अच्छे आ गए थे। जिसे कहते हैं काइंड ऑफ फोर्स्ड द इशू। यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी इस किस्म के शॉट की, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन अब जो है वो 18 रन्स बनाकर 25 गेंदों पर पवेलियन वापस। रवेल ने अपना काम किया है, क्योंकि जितने रन्स बोर्ड पर हैं, अगर आप 34 पर अपनी पहली विकेट दे रहे हैं तो एक मोमेंटम टीम ने खोया नहीं है। लेकिन लर्निंग प्रोसेस यही था कि जब आपको 10 रन मिल गए थे और थोड़ी सी खिंची हुई गेंद थी, थोड़ी पीछे थी, तो आपको चांस नहीं लेना चाहिए था। सिंगल के लिए चले जाते या डॉट बॉल भी खेलते तो आपने 10 रन हासिल कर लिए थे। 8 ओवर में 34, 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान वुमेन्स। .25 करंट रन रेट पाकिस्तान का, 6.33 दरकार है। अभी इतना आसान टास्क नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर मैच है पाकिस्तान के लिए ये। बॉटम एज होते होते बच गई। यहाँ पे लिविंग डेंजरसली कोमल खान सामने है और अक्सर जो है वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, नया आने वाली बैटर। इससे पहले गेंद खासी नीचे रह गई थी, हमने हालांकि अब तक देखा नहीं जो गेंद जिस पर बॉटम एज लगते बची थी कोमल। कोमल खासा टाइम क्रीज पर गुजार चुकी है, इन पे जिम्मेदारियां बहुत। जोरदार हिट लगाई है यहाँ पे, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं आई, लेकिन 1 रन के लिए काफ़ी ये स्ट्रोक। अक्सर जो कि अब स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंची हैं, पहले मैच में इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड की थी ज़ोफी शाह के साथ मिलके। जब पाकिस्तान की शुरू के पहले 2 ओवर्स में 3 विकेटें गिर गई थी, 61 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। अक्सर हबीब 38 रन स्कोर कर रखे हैं। वेरी वेल बोल्ड, बड़ी जगह पे गेंद कर रही हैं जिथे पे। .62 आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है, इसको भी मेंटेन रखना होगा दोनों बैटर्स को। बिल्कुल, बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करती हैं डीटीपी और इनके अगेंस्ट रन करना जो है वो आसान नहीं है। इस मरतबा क्रीज को यूज किया बैटर ने और अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग कर रही हैं। यही वजह है कि इतनी किफायत शार हैं। अपनी जितनी भी बॉलिंग स्पेल्स इन्होंने की हैं इस सीरीज में, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। वो जानती हैं कि कहाँ पे उन्होंने फील्ड सेट की हुई है और किस लाइन पर उन्होंने जो है गेंदबाजी करनी है। बहुत अच्छी, बहुत कंट्रोल्ड बॉलिंग। आप देखें इनकी लेंथ देखें खास तौर पे, और ये बड़ा टिपिकल ऑफ स्पिनर वाला अंदाज भी है इनका, जिस तरीके से बॉल करने के बाद भी दोबारा ग्रिप शो करना। 9 ओवर मुकम्मल हुए पाकिस्तान वुमेन्स की इनिंग के 36 पर 1। बॉलिंग कार्ड हमने देखा, मबासा ने विकेट दिलाई और अब तक 2 ओवर में 14 रन उन्होंने दिए। ऊपर बॉलर्स की अगर इकनॉमी देखें तो आपको बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देगी। दिपेटी ने ज़बरदस्त स्पेल किया, 3 ओवर 6 रन दिए हैं सिर्फ, और 4-4 के इकॉनमी से मिया ने और वेनविक ने बॉलिंग की। जी हाँ, अभी तक सिर्फ 4 बॉलर्स जो हैं वो इस्तेमाल की हैं साउथ अफ्रीकन कप्तान ने। उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज मौजूद हैं, ख़ास तौर पर स्पिन डिपार्टमेंट में। सिर्फ एक ही मिया उनके पास पेस बॉलर है, बाकी सब स्पिनर्स हैं।
और कप्तान अब खुद जो है वो बॉलिंग के लिए आई हैं। और इस बार बोल्ड कर दिया, ये बहुत ही शानदार मीकी, कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19, जिन्होंने कोमल की विकेट हासिल की, जो खासा टाइम क्रीज पे गुजार चुकी थी। गेंद बिल्कुल ही सीधा रहा। जी हाँ बिल्कुल, ये इतनी डिसेप्टिव बॉल थी, ऑलमोस्ट ग्रेट शेन वॉन की याद ताज़ा कर दी है यहाँ पे। बिल्कुल जिस तरह ये सब कुछ स्लो मोशन में हुआ है, ये साइड ऑन एंगल से फ्रंट फुट की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आप देख सकते हैं काफी एयर दी थी बॉल को और थ्रू द गेट बोल्ड किया। यहाँ पे कोमल के पास कोई जवाब नहीं था इस खूबसूरत लाइन और लेंथ का। टॉप ऑफ कोमल ने जितनी गेंदें खेली थी उसके बाद उन पे जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। 15 रन बनाए 28 गेंदों पर। जब आपको इतना टाइम क्रीज पे हो जाए तो फिर थोड़ी बारी आगे लेके जानी होती है। अब नए आने वाले बैटर्स पे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि रन रेट बढ़ता चला जा रहा है। और ये ड्रिंक ब्रेक फिर से खुश आमदेद ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। बड़ी अच्छी एक ड्रीम डिलीवरी जो है वो की थी कप्तान ने और कोमल खान को जो है वो आउट करने में कामयाब हुई। और अब जूफी शाह जो है वो नए आने वाली बैटर हैं। आते ही सामने की जानिब खेला जूफी शाह ने। ये वो लास्ट विकेट थ्रू द गेट, खूबसूरत गेंद, टॉप ऑफ। कोई जवाब नहीं था कोमल खान के पास। इस किस्म की बॉल शायद स्पेल में एक आध होती है। लेकिन कैप्टन बहुत ही मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से उन्हें फील्ड प्लेसमेंट ली हुई है, बड़ी अटैकिंग फील्ड लेके गेंद कर रही हैं, चांस ले रही हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स चांस लें। जी हाँ बिल्कुल, प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है और अब 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं। मीका ने काफी रोक के रखा खुद को। लेट आई, 10वें ओवर में बॉलिंग के लिए आई और अपने पहले ही ओवर में कामयाब रही हैं अब तक। वेरी गुड कैप्टनशिप। दूसरे एंड से पाकिस्तानी बैटर्स चूंकि डॉट बॉल ज्यादा खेल रही थी, उन्होंने अपने आप को रोक के रखा और खुद को आखिरी ओवर्स के लिए जो क्रूशल ओवर होंगे वहां के लिए बचा के रखा। अच्छी कैप्टनशिप मिकी की जानिब से।
डॉट बॉल्स की तादाद बढ़ नहीं रही है, बॉल बल्कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। 10 ओवर 38 रन, 2 आउट पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19। और ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि हम खुद अपने आप को फंसा लेंगे, कुछ इस तरीके की सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान वुमेन्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़ीशान खालिद और अली यूनुस जब बैठेंगे तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। इट्स ओवर टू यू ज़ीशान एंड अली। Thank you so much, Naseem Rajput and FS Malik. 38 for 2 Pakistan. They need to do something different. They have to break some shackles and get some boundaries if they want to get closer. Nicely driven, and she gets that one through the fielder. Long chase for the fielder and mid-off. A dive, but it goes in vain as Zulfisha collects a boundary on the offside. They need few more of those Pakistani girls. The required run rate at the start of the innings was under 6, but now that is touching 7 and over. An error committed by the fielder at extra cover allows Zulfisha to get her first boundary. Putting their body on the line, ensuring that they make these Pakistani girls work hard for each and every run here. Now she goes for the sweep. There is protection out there, but the ball will curl away from her. Just settling for a single. Yeah, very important phase of the game, where I believe Zulfisha, she holds the key. She's the one who can hit big sixes, and then the captain to follow. She's also a big hitter, and Aksa has to play that role of rotating the strike. Good call. There was never a single there. Yeah, rotating doesn't mean that you run yourself out. But Pakistan just have put themselves in a hole. As we said earlier, one brings two, and Pakistan have lost a couple of quick wickets. They now need to rebuild, make sure that they don't run themselves out, build a partnership 3 to 4 overs from here on, and then hope that the captain hits those big sixes. Slightly uppish, opportunity and taken. Not what the Pakistani girls wanted, but delight on the faces of the South African girls. Shot under pressure. There was no need, there was no point, because they needed a partnership. But Aksa looking for the glory, looking for a big one, looking to play it over the head of that fielder, but there was no timing whatsoever. Have a look at this, bit of a nothing shot in the end. Probably looking to play it towards the left of the fielder for a one, or maybe go over the head. I don't know what this shadow practice means, but she will have to go back. Pakistan in trouble, 43 for 3, Aksa scores 2. Arisha now joins Zulfisha out there in the middle. Well, that's what happened when you show no respect to respect Mabasa. She keeps on picking up wickets against you. Oh, knocks her over off the very first ball. Would you believe it? Was there a need to be that aggressive of the very first ball you're facing? Yeah, you say, would you believe it? I say, yes, I believe it. I predicted it. This to happen to Pakistan. Yeah, probably she's suggesting that I wanted to go for a long on single. Pakistan doing Pakistan things. Yeah, probably too full. Ultra positive you wanted to be from the word go, from the first delivery.
Not realizing she's put Pakistan in a deeper, deeper hole. She goes without scoring. Taking a hole for themselves, the Pakistani girls. Within a span of few minutes, they are now from being 43 for 2 to now 43 for 4. Fizza Fiaz walks in at number 6 with a big responsibility on her shoulders. A hat-trick ball, which was a full toss, was well negotiated. He's having an excellent time in Karachi. Respect Mabasa. 3 for 19 so far. 11 done is 43 for 4. Yeah, South Africa surely are on top at the moment. And lots of credit to the management of South Africa and the captain. Remember, you earlier spoke about South African having 3 or 4 spinners in their side. Pakistan only had 2. I think that's the difference between two sides. Worked off her legs. The reason why Mieke is trying to bowl that leg stump channel is because Zulfisha lost her wicket a couple of matches ago, bowled round her legs. So she might have spotted a weakness against Zulfisha. Yeah, this partnership is the key. Although Pakistan have the luxury of a few bowlers who can bat, Sherwano in particular. But I believe they have to do a bulk of runs from here on. It's going to get off the mark, Fizza. She'll have to lead from the front, just like the way Mieke did in the previous match. Searching for runs, the strike rate has been on the lower side. But she's having an excellent time, respect Mabasa. It has to be the captain raising her hands that I'm going to do it for my team. Nicely tucked away. There is no one at fine leg. Square leg will have to cover a lot of distance. And that will allow Zulfisha to come back for a second now. Was that close? At least one thing is clear, that she's learned, she's improved, that she's not going to go for that sweep shot. Although Mieke is trying her best bowling around the wickets. Good to see lots of families here. I'm sure they're the families of the players. There are the few young upcoming players also in the background. And food. Mr. F.S. Malik is right back. Just letting you know. Sensible batting. You can now see the urgency on the face of Zulfisha. She's looking for runs no matter how they come. They'll have to run the same way like South African batters were running between the wickets, obviously without getting run out. Yeah, these two are the most skillful one and the experienced one. Although they're all young, but still out of them, these two are the experienced ones. She's looking much more confident today, Fizza, as compared to her previous couple of outings where she was struggling a bit. I still remember in one of those matches she was forced to get retired out because she couldn't really play aggressively. It's good to see families and parents supporting these young girls. Yeah, I thought I saw Mr. F.S. Malik right there with the food center just in a minute, just in a blink of an eye he was there. Teleporting F.S. Malik. They've covered that region of the ground. A single to win the over. 12 overs now done and dusted. Pakistani girls are 51 for 4.
So far, the bulk of the scoring has been done by the openers. Komal scoring 15 of 28. Ravel also scoring 18, but took quite a lot of time before they were dismissed. Aksa just scoring 2. Zulfisha is still out there, and the hopes are still alive for the Pakistani girls as long as she's out there with the captain. Arisha got a first ball duck today. Next spinners now operating from both the ends. Captain from the other, and now Ashley Van Wyk has been brought into the attack. Now, good captaincy. South African captain Van Voorst. She understands that if they break this partnership, then they'd surely have one hand up in this game. So she's brought back her ace bowler. And she's getting some turn. And we know that pitches here in Karachi, they get slower and slower. The spinners come into play as the match progresses. So good captaincy, good call of playing 3 spinners. It's not the first time we have seen Fizza struggling with the ball, turning away from her. Even in that match we were discussing, when she was forced to retire out, Ashley Van Wyk bowled the last over of the innings and she couldn't really get a bat onto any ball that she faced. I'm sure there will be no chance of retiring her out tonight because they do need her till the end. And we know her, she has the potential of going big, hit big sixes. Remember, she has the fastest 50 for Pakistan at this level, at under 19 level. She's known for hitting big sixes. Both of these batters actually, Zulfisha and Fizza, both are known for big sixes. But probably this situation demands a different approach that is needed. And they've done well so far. They're not letting the pressure get to them. They're rotating the strike. Only these 3 deliveries have been dot deliveries. They got to believe that they can cover up on these dot deliveries. Fortunate thick outside edge, short third man in pursuit, and she does well. Couple of runs for Fizza Fiaz. Yeah, and some luck your way definitely will help it. Although that required rate is just creeping up, 7.81 now. But that shouldn't be a problem for these 2 power hitters. It's that delivery again. No matter if it is short or fuller in length, she's just missing them. Quiet over this for Pakistan. 13 done, it's 54 for 4. Just 20 runs have come in the last 5 overs. Shreya has been introduced for the first time in this game. Picked up just 1 bounce to the fielder at deep mid wicket. Maybe now is the time for these Pakistani batters to show a bit of aggression against the new bowler, bowling for the first time. Shreya swept away. She gets it in the gap. Might go all the way for 4, and it does. That will take the pressure off the skipper. Definitely, that will ease some nerves. She struggled in the previous over, but here she got a juicy one to be hit. So she now moves to 8. So that's what I said, that required run rate, they will always catch up because they will get these boundary deliveries. Now she gets a full toss. The fielder getting closer, but she won't be able to stop that one. Back-to-back boundaries from the skipper. Yeah, very brave.
There were two fielders entrusted for that catch. But lucky for her that she placed it in between those two. Yeah, probably she's decided that if it's there to be hit, and this one surely was there to be hit. It was a full toss. All she had to do was place it in between. Yeah, there were two fielders entrusted, but still she managed it to play it between. So this is already a good over for Pakistan. Oh, that's a juicy delivery. And it gets the treatment it deserved. I'm really interested to see the umpire's decision on that one, because that looked pretty high. But nevertheless, it's another boundary. 3 in 3 balls now for Fizza. Yeah, excellent over. Excellent over for Pakistan. Something that they really, really required. 43 now of 38 deliveries. Because a part-time spinner in a crucial situation will give you those boundary deliveries. And this one was always dipping on her. The point of contact, maybe this on the waist side or maybe below. They need an over like that, the Pakistani girls. The momentum can easily shift if you get an over like this, where you get 3 boundaries. And all the confidence that was lacking in Fizza Fiaz's performance will eventually get back. Very sensible. Hitting a single and keeping the strike to herself. Good over this for the Pakistani girls. 14 done. It's 68 for 4. Having a time of her life, enjoying a live cricket game in an international cricket stadium, and getting caught by one of her cameramen. That last over was a very productive one for the Pakistani girls. And that has forced a change in the bowling attack. Seems like it's going to be Mia Lenore who will return to the bowling crease. Slightly unlucky with the new ball. Starts off with a widest delivery. And given by the umpire. Yeah, you can hear in the background every run being cheered by the team in the dugout. They just become lively now. These fellow cricketers also here in the ground supporting the team. Probably they will get their turn soon. But a very different men like these supporting women cricket. Wants a single. She'll get there eventually. I mean, this day and age, women cricket is neck to neck with men's cricket as well. Especially the competition that has become very fierce
with a lot of global tournaments that gets played after every couple of years. And that's why those expectations have started to rise in Pakistan. People also, they expect Pakistan to win every time. And what they don't understand it, we're still new to it. We're still adapting to international cricket. Outside edge, and that will run fine. Third man with a bit of a fumble, but she eventually stops that one. Yeah, they've got third deep. So she's probably bowling with a particular plan because she's got a deep point, deep extra cover in place with a fielder at a cover position. So this is going to be the line for her. And the fielder at third is quite squarer. So there is always a chance that it will go and won't go for a boundary. Now she takes the aerial route. Might get hold out, but it's put down. But a brilliant effort nevertheless from the fielder in the deep. Chanel Venter tried her best diving forwards. Might have got her fingertips to it. Yeah, I won't call her a drop chance. I would call it a splendid effort. She had to run from a long way, then had to dive in front. Excellent effort. Yes, had it been taken, it would have been a brilliant, brilliant catch. It's not the first time she has erred in line and length in this over. She's definitely come out with a plan of coming around the wicket. She has taken all the fielders deep on the offside, hardly any protection deep on the leg side. So her line of attack has been outside the off stump. There you see, just long gone in place. Fine leg, square leg, mid wicket, inside the inner ring, deep backward point and deep extra cover, as if she wants the players to drive on the offside. But those three wides have now forced her to change the angle. Yeah, what it does is just leaves the bowler with very little margin. Yeah, probably now she's gone back to the regular field because that was not working. She was looking to bowl it outside the off stump, give away two wides. Now the mid wicket is back and the fielder extra cover coming in. Good looking stroke, but that fielder has been kept very busy. He'll be feeling a sigh of relief, especially after a few runs that have come in the previous couple of overs. That's what we all need, a win here today for the home team, and it's going to be a cracker of a finale on Friday. Just doesn't carry to mid-off. She wanted to go over her head, couldn't do it. Couple of dots to end the over. 15 done. It's 74 for 4. And to take you to the end of the game for the next 5 overs, it's going to be Naseem Rajput and FS Malik in the com box. शुक्रिया ज़ीशान एंड अली। कप्तान फिज़ा फयाज जो हैं वो एक कैप्टन्स इनिंग्स अभी तक जो है वो खेल रही हैं और देखना होगा कि कितनी देर जो है उनका टेम्परामेंट जो है वो उनका साथ देगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो हर गुजरते ओवर के साथ जो है वो माउंट कर रहा है, बढ़ रहा है। अलबत्ता प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजीज़, ये मुकाबले, ये सीरीज़ आपके लिए बराह रास्त नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, बड़ी खूबसूरत कवरेज, शानदार कवरेज और उतनी अच्छी क्रिकेट भी दोनों टीमों ने खेली है। क्या पाकिस्तान सीरीज लेवल करेगी, इन दोनों बैटर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। और इस बार कॉटन बोल्ट का चांस था, यहाँ फिजा सामने की जानिब खेल गई थी, लेकिन थोड़ा सा तेज शॉट था, फील्डर अपने आप को बॉलर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकी, वरना ये एक और नुकसान हो सकता था। जी हाँ, अगर आप रिक्वायर्ड देखें रन्स तो 36 चाहिए 29 गेंदों पर। ये एक बार फिर ये कॉटन बोल्ट का चांस था, जोरदार हिट लगाने गई थी।
बॉल थोड़ी सी नीचे रह रही है और ये दोनों बैटर्स को ख्याल भी करना होगा। ऑन साइड की जानिब खेला, फील्डर को दौड़ के जाना पड़ा। रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन कम से कम इनको करने चाहिए। थोड़ा सा ये अगर कप्तान कह रही हैं तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। थर्ड मैन पे पिछले ओवर में गेंद गई थी, वहां पर भी 2 रन हासिल किए जा सकते थे जब आउटसाइड एज लगा था। तो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट इस जगह। जी हाँ, दोनों जो हैं वो बाउंड्री हिटर्स हैं और रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स पे कम ही इन्हिसार करती हैं। गलत करती हैं और इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब खेला। बहुत ही शानदार एफर्ट फील्डर के, लेकिन 4 रन हासिल हुए। पाकिस्तान वुमेन्स के कैंप में आपने देखा इस बाउंड्री ने एक खुशी की लहर दौड़ा दी है। जी हाँ, बिल्कुल टाइमली ब्लो था ये ज़ूफी शाह की जानिब से और 4 कीमती रन्स इनको हासिल हुए। ये आप देख सकते हैं, जोरदार अंदाज हिट किया था बॉलर के सर के ऊपर से और मिड ऑन को भी क्लियर किया। बड़ी अच्छी एफर्ट, मिड ऑफ से दौड़ती हुई आई, डाइव की, लेकिन गेंद को संभाल ना सकी। बड़ी अच्छी एफर्ट। और इस बार ऑन साइड की जानिब खेला और एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुई ज़ूफा शाह। जबरदस्त बैटिंग ज़ूफा शाह की, बैक टू बैक बाउंड्रीज। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और उसको ऑन साइड पर खेली, स्क्वायर लेग के एरिया में खूबसूरती के साथ एक बाउंस के साथ 4 रन हासिल किए। ज़ूफी शाह ने जो है वो चार्ज शुरू कर दिया है और वो समझती हैं कि शायद ये ओवर है जिसमें वो मोमेंटम वापस हासिल कर सकती हैं पाकिस्तान के लिए। कोई एक अच्छा ओवर पाकिस्तान को मैच में वापस ले आएगा, ऐसा नहीं है कि ये टारगेट हासिल नहीं हो सकता है। तकरीबन रन बॉल इक्वेशन है, बहुत ज्यादा हिट करने की भी जरूरत नहीं है। एक बाउंड्री एक ओवर में और इस विकेट को कैरी करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पहली मर्तबा हमने देखा है इस सीरीज में मिया के अलावा अगर कोई बॉलर जो हैं वो मीडियम पेसर के तौर पर सामने आई हैं तो वो समझती हैं कि ये पार्ट टाइमर हैं दोनों पाकिस्तानी बैटर्स, इसलिए चांस ले रही हैं इस ओवर में। एक मरतबा फिर सामने की जाने भेट, लेकिन मिड ऑन पे खड़ी फील्डर वहां मौजूद। 1 रन हासिल हुआ, अच्छा रन भी नहीं बनाया। रनिंग बिटवीन द विकेट मेरे ख्याल है कोच को जरूर देखनी चाहिए। 16 ओवर मुकम्मल हुए, 84 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19। ये अब तक जो ऑप्शंस आजमाए हैं साउथ अफ्रीकन कप्तान ने, उनमें मबासा जो हैं वो पिक ऑफ द बॉलर रही हैं। बॉलर्स 3 विकेट्स उन्होंने हासिल की और कप्तान ने खुद भी एक खिलाड़ी को आउट किया। बाकी 5 बॉलर्स जो हैं वो विकेट लेस रही हैं। तो 7 ऑप्शंस जो हैं वो अब तक यूज कर चुकी हैं जो जनूबी अफ्रीकन कप्तान। इस बार गैप में खेलने में कामयाब हुई, फील्डर को दौड़ के जाना पड़ा और ये भी 1 रन बनाया। ये रनिंग बिटवीन द विकेट एटलीस्ट 3 से 4 रन पिछले 2 से 3 ओवर में पाकिस्तानी इन बैटर्स ने मिस किए, जो बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। शायद इनके कोचेज इन्हें जरूर गाइड करेंगे इस सिलसिले में। 4 रन बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया नसीम राजपूत। और ये आप देख सकते हैं बैकफुट पर जाकर रूम बनाकर जोरदार अंदाज से खेली थी। बड़ा वक्त मौजूद था दोनों बैटर्स के पास कि दूसरा रन भी ले लेती, लेकिन ये लेयर रनर्स हैं, सुस्त रनर्स हैं दोनों। पहला रन तेज नहीं लिया था जिसकी वजह से दूसरे रन के लिए चांस नहीं ले सकी। अगर आप देखते तो पहला रन जिस स्पेस के साथ ले सकती थी, और यही प्रेशर डालना होता है फील्डर पे। वो साउथ अफ्रीका के फील्डर्स पे वैसे प्रेशर कम ही आता है। और इस बार सामने की जानिब हिट लगाई, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई और ये डग आउट बता रहा है कि पाकिस्तान टीम कदरे बेहतर पोजीशन में आ गई है। जी हाँ, इनकी सुस्त रनिंग जो है उसकी एक वजह ये भी है कि इनका स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। चार्ज करते हुए सीधे बल्ले के साथ
उम्दगी से इस बॉल को कनेक्ट किया और एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर कप्तान फिजा फयाज जो हैं वो आज एक बिल्कुल लीड से फ्रंट करते हुए उम्दा इनिंग्स खेलती हुई पाकिस्तान विमेन अंडर 19 के लिए। अच्छी गेंद इस बार कट करने गई थी कप्तान फिजा ने आके फिजा बदल दी है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की। ये शाउटिंग आप देख सकते हैं, क्लैपिंग, बकिंग अप, जेल दिखाई दे रही है ऑल ऑफ अ सडन। तो ये होता है मोमेंटम। जब मोमेंटम शिफ्ट होता है तो यकीनन आपके कैंप का, आपके डगआउट का माहौल ही बदल जाता है। डॉट बॉल, एक एक डॉट बॉल प्रेशर जरूर बढ़ाएगी इन दोनों बैटर्स पर। और ठीक है, आप अगर अच्छी हिटिंग भी कर लेती हैं तो जो रन आपको भाग के मिल रहा है वो नहीं छोड़ना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं हिटर अच्छी हूं तो मैं रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर नहीं कर सकती। ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो 3-4 रन पाकिस्तान ने मिस किए, बाउंड्री पे डीप कवर से दौड़ के जाना पड़ा, थर्ड मैन की फील्डर ने फंबल भी किया, दौड़ के भी आई। गुड रन, गुड रन। ये अच्छा रन हासिल किया है। यहाँ पर थोड़ा प्रेशर डालें अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट से। या थोड़ी सी अर्जेंसी जरूर दिखाई और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि आप सिर्फ बाउंड्रीज पर इन्हिसार नहीं कर सकती। यू हैव टू कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग ओवर। 17 ओवर्स के बाद पाकिस्तान 90 पे 4। पाकिस्तानी फ्लैग, हर लम्हे पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस वक्त पाकिस्तान टीम भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है और खासकर ये जो 5th विकेट पार्टनरशिप है, इसने जो मोमेंटम दिया है पाकिस्तान की बैटिंग को, ये खुशियां इसी वजह से दिखाई दे रही हैं। 3 ओवर में 20 रन अब भी करने हैं, इतना आसान टास्क नहीं है। कैप्टन का ओवर बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ा अच्छा ड्राइव किया था एक रन के लिए। ये पार्टनरशिप बड़ी अहमियत की हामिल है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए। जूफी शाह और फिजा जो है वो आज बड़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दी और मोस्टली जो बॉल्स हैं उनके मिडल ऑफ द बैट हिट हुई। 48-38 बॉल्स पे की है इस पार्टनरशिप ने और ये बड़ी क्रूशियल मैच विनिंग पार्टनरशिप बन सकती है ये पाकिस्तान के लिए। एक और डॉट बॉल और ये बैकअप भी उतना ही अच्छा यहाँ पर था, वरना ओवरथ्रो का रन मिलता पाकिस्तान को। या साउथ अफ्रीकन आपको इजी सिंगल्स या इजी रन बिल्कुल नहीं देंगे। फील्डिंग की वजह से बड़ी शोहरत है साउथ अफ्रीकन साइड, चाहे वो किसी लेवल पे भी हो, बॉयज हों या गर्ल्स हों। इस बार जूफशा ने ऑन साइड की जानिब खेला, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन हासिल कर पाएंगी। जूफशा की भी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गई और फिजा ने अपनी टीम की बारी को संभाला। लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जी हाँ, जो फासला है रिक्वायर्ड रन्स एंड बिटवीन द बॉल्स जो है रिमेनिंग वो थोड़ा सा बढ़ रहा है और इस वक्त जोरदार हिट लगाना चाहती थी, मिडल नहीं कर पाई। अर्जेंसी करनी होगी और इन दी एंड रन कंप्लीट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बाउंड्री की तलाश में हैं दोनों बैटर्स। रनिंग बिटवीन द विकेट एक एक्सपेक्ट तो हमने ऐसा जरूर देखा है कि जिस पे काम करने की जरूरत है, लेकिन अभी अंडर 19 प्लेयर्स हैं और खासकर ये जो सीरीज हो रही है ये फलक शेर बहुत इंपॉर्टेंट और ये बाउंड्री भी बहुत इंपॉर्टेंट। लूज बॉल की थी यहाँ जिसका पूरा फायदा उठाया जूफशा ने और 4 कीमती रन पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 के लिए हासिल किए। जी हाँ, बिल्कुल वही गेंद जिसकी पाकिस्तान बैटर्स को जरूरत थी। हिट मी बॉल थी और उसको खूबसूरती के साथ हिट करते हुए फाइन लेग के एरिया में 4 रन हासिल किए। बड़ी उम्दगी के साथ खेली जूफी शाह और अब जो है रना बॉल रिक्वायर्ड है। इक्वेशन
पाकिस्तान के हक में दिखाई दे रही है। सेंसिबल बैटिंग, वेरी वेल प्लेड ज़ूफ़शा। इस तरह इस बॉल के साथ 18 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 98, 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान 12 रन 2 ओवर में दरकार हैं। और फिजा और ज़ूफ़शा, ये पाकिस्तान की इनिंग लास्ट 30 बॉल्स में हमने देखा कि डॉट बॉल्स भी फलक शेर कम थी। 10 डॉट बॉल, 5 चौके लगे, यहाँ पर 35 रन पाकिस्तान ने हासिल किए। तो लास्ट 30 बॉल्स ने पाकिस्तान की बैटिंग का नक्शा तब्दील कर दिया। और इसमें ज़ूफ़शा का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कैप्टन का है। 55 रन की पार्टनरशिप 43 बॉल्स पर फिजा एंड ज़ूफ़शा। जी हाँ, इसको आप गेम चेंजिंग पार्टनरशिप अब तक जो है वो कह सकते हैं। और यकीनन अब इन दोनों बैटर्स को चाहिए कि वो फिनिश भी करें फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान और फॉर द सेक ऑफ सीरीज भी। नसीम भाई देखें कि अगर पाकिस्तान आज मैच जीतते हैं तो फिर 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह जो है वो कवर किया रिक्वायर्ड रन रेट को। मिडल के ओवर्स में काफ़ी नीचे चला गया था रन रेट, करंट रन रेट जो था पाकिस्तान का, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल वर्म जो है वो जो सब्ज वर्म है वो पाकिस्तानी बैटर्स का ग्राफ है और उसने हिट कर लिया है येलो वर्म को। बिल्कुल हिट करने में कामयाब हो गए। अब बस इन 2 ओवर में भी एक अच्छी हिट कर लें तो पाकिस्तान बहुत क्लोज पहुंच जाएगा मैच के। डीटीपी बड़ी इकोनॉमिकल रही हैं, 3 ओवर्स में मैच 6 रन दिए हैं। जोरदार स्वीप करना चाहती थी और मिस टाइम तो किया, लेकिन दूसरे रन की गुंजाइश नहीं है। और अब कप्तान जो है वो सामने आई है। सीरीज हार या जीत से ज़्यादा जो लर्निंग प्रोसेस है इन बच्चियों का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनरशिप मैच विनिंग बनती है तो बहुत कॉन्फिडेंस देगी कि एक मुश्किल जगह से आप मैच निकाल के आए। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, फंबल किया है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक ही रन बनाया। आई थिंक रनिंग बिटवीन द विकेट एक खास फोकस होना चाहिए अगले मैच के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ख़ास तौर पर इनको थिंक टैंक को कमेंट्री का ये सेशन जो है वो सुनना चाहिए, क्योंकि बार बार नसीम भाई जो है वो इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट भी है। इस मरतबा गैप हासिल करने में कामयाब हुई और ये बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर चली जाएगी और पाकिस्तान का स्कोर जो है वो टारगेट के करीब जाता हुआ यहाँ पे। ज़ूफ़शा यू ब्यूटी, इस बार जो खूबसूरती से उन्होंने कवर के टाइम किया है शॉट को, ग्राउंड शॉट, ओवर पिच गेंद मिली थी यहाँ पर जो पिछले ओवर में आपको रन्स मिले, पिछली बॉल पे रन्स मिले थे। इस बार ओवर पिच गेंद की जिसे गैप में ड्राइव किया और 4 रन हासिल किए ज़ूफ़शा ने। अलबटल यू ब्यूटी। एब्सोल्युटली, डीटीपी जो कि बड़ी किफायतशार थी अब जो है इस ओवर में बड़ी महंगी साबित हो रही हैं, क्योंकि बैटर्स ने जो है वो अपना जहन बना लिया है कि दे हैव टू डू इट नाउ। इस मरतबा इनको कम से कम 2 रन मिलने चाहिए। जी हाँ, 2 रन हासिल किए दौड़कर। वही वेल प्लेड और खुशी, एक एक चेहरे के ऊपर इत्मीनान कि उनकी टीम जीतने की पोजीशन में आ गई है। और कुछ टेंस आप देख सकते हैं अब साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। ज़ूफ़शा स्क्रीन पर आतिश फिशा बन के खेली है ये जिस मुश्किल में टीम चली गई थी। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल शी वाज इन 2 माइंड्स कि इस बॉल को खेलें या उसका दिफा करें, लेकिन इन दी एंड ऑकवर्डली बीट हुई, लेकिन लकी रही कि बॉल बच गई स्टंप होने से। सीधी गेंद की थी या दीपिती ने ब्रेक नहीं किया था और वो ब्रेक खेली थी जिसकी वजह से डिसीव हुई। बाउंड्री से दूर पाकिस्तान चांस लेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी बैटिंग और ये बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। कैप्टन बैट पहले रख देती, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है ये, देखना होगा
ऐसा लगता है कि थर्ड अंपायर की जानिब यस रेफर करने वाला डिसीजन ये जरूर है। ऐसा लगा कि थोड़ा सा बैट लेजी अंदाज से कप्तान ने रखा है। जी हाँ, बल्ले को प्रॉपर तरीके से ड्रैग नहीं किया था, जिसकी वजह से शी कुड बी इन ट्रबल। और अब रीप्ले में जो है वो वाज़े तौर पर नजर आ जाएगा। टीवी अंपायर को डिसीजन रेफर किया गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी कमिटेड कप्तान जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। ये रनआउट इस मैच में कुछ भी सूरत हाल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 4 रन आखिरी ओवर में अब भी दरकार होंगे और एक अगर रनआउट होती हैं तो फिर एक नई बैटर क्रीज पर आएंगी। तो हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि फाइनल अच्छा हो। मैंने फिर कहा हार जीत से बेहतर इन बच्चियों का लर्निंग एक्सपीरियंस है। बाउंड्री से तो आवाज आई है हमें कि पहुंच गई है, लेकिन अभी देखते हैं कि पहुंची है या नहीं पहुंची, अंपायर बताएंगी। जी हाँ, ये टीवी अंपायर फैसला देंगे। और अगर डायरेक्ट हिट होती तो बहुत खतरनाक हो सकती थी, लेकिन डायरेक्ट हिट ना होने की वजह से थोड़ा सा वक्त मिल गया बैटर को, जिसकी वजह से मे बी शी विल बी सेफ, बट द टाइम विल टेल। बड़ा है तो थोड़ा सा ट्रिकी डिसीजन है, इसी वजह से थोड़ा टाइम भी लिया थर्ड अंपायर ने। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है दोनों टीमों के लिए। ये एंगल जो है वो बेहतर आइडिया दे सकेगा और बड़ा करीबी मामला है। उनका बल्ला जो था वो हवा में थी, हवा में भी था, लेकिन उन्होंने ग्राउंड भी किया, उसको ग्राउंड कर दिया एंड वक्त के ऊपर। बिल्कुल ऐसा लगा कि वो बैट ग्राउंड करने में कामयाब हुई हैं और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन थर्ड अंपायर की जानिब से। नॉट आउट इसलिए नहीं कि पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में है, बल्कि डिसीजन बड़ा थोड़ा टफ था और अच्छा डिसीजन। ना सिर्फ रन आउट से बची, बल्कि एक कीमती रन भी पाकिस्तान के लिए और बढ़ गया और 107 पे 4 19 के बाद। ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि आखिरी ओवर में 3 रन दरकार हैं, दोनों सेट बैटर्स मौजूद हैं, लेकिन टीम ने मीटिंग की और मीटिंग करके जिस तरीके से जिस एनर्जी के साथ उन्होंने दोबारा ग्राउंड में जाने का फैसला किया, अपनी एनर्जी को कम नहीं होने दिया। वेल अच्छा लगा ये देखने के बाद। इस सीरीज की नसीम भाई जो सबसे अच्छी बात मुझे नजर आई, बिल्कुल जो मुकाबले हैं वो वेल कंटेस्टेड नहीं थे। आज का मुकाबला जो है वो कदरे ज्यादा कंटेस्टेड रहा पिछले 3 मुकाबलों की निस्बत, लेकिन जो कम बैक करने की सलाहियत और प्लेयरों के लिए जो सीख हमें देखने को मिली वो बड़ी काबिल तारीफ रही इस सीरीज में। ऐसे फेजेस में से ये प्लेयर्स इस एज में अगर गुजरेंगी तो यकीनन फ्यूचर में बड़ा कारआमद साबित होगा उनके लिए हर एक तजुर्बा। फलक शेर, हम साउथ अफ्रीका से सीरीज खेल रहे हैं, ये अच्छी फॉर्मिडेबल टीम है वर्ल्ड क्रिकेट की। इसी तरह हमारी बच्चियों को मौका मिले, एकदम से मौका मिलता है जाके ऑस्ट्रेलिया से खेलने का, इंग्लैंड से खेलने का। हमारी बायलैटरल सीरीज भी बहुत कम होती है, तो ये सीरीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और जूनियर सतह पे खास तौर पे। मिया को यहाँ पे लाया गया है आखिरी ओवर करने के लिए। ये इनकी प्रीमियर पेस बॉलर हैं और बड़ी कामयाब भी रही हैं इस सीरीज में। शी हैज द नैक ऑफ पिकिंग अप विकेट्स। इनको आदत है विकेटें हासिल करने की, विकेट टेकिंग डिलीवरीज प्रोड्यूस करती रहती हैं वक्तन फवक्तन। पहली गेंद डॉट बॉल, इस तरह 5 गेंदों पे 3 रन दरकार पाकिस्तान। इस बार प्रॉपर कनेक्शन 6 रन के साथ ज़ूफिशा ने इस मैच को खत्म किया। पाकिस्तान 6 विकेट से मैच जीतने में कामयाब हुआ और वंडरफुल विक्ट्री बाय पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 टीम। एक वक्त में बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन ज़ूफिशा और कैप्टन ने जिस तरीके की पार्टनरशिप अपनी टीम के लिए बनाई, और ये कोच मसरूर, बहुत क्रेडिट जाएगा मसरूर को। ये पाकिस्तान की जीत पे दिल पाकिस्तान। फलक शेर, अब फाइनल भी बड़ा जबरदस्त, यहाँ बड़े उम्दगी के साथ और एक स्टाइलिश अंदाज में फिनिश किया ज़ूफिशा ने।
खूबसूरत छक्का वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया और शी गॉट हर साइड ओवर द लाइन और यकीनन एक मैच विनिंग इनिंग्स बल्कि मैच विनिंग पार्टनरशिप और कप्तान ने भी फ्रंट से लीड करते हुए जब उनकी अशद जरूरत थी ज़ूफ़ी शाह का साथ दिया और एक ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड की जिसने इस सीरीज को जिंदा रखा और पाकिस्तान को एक बार फिर वापसी करने में जो है वो मदद दी इस पार्टनरशिप ने और जो इस सीरीज की रवायत थी कम बैक्स की वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बरकरार हुई है। बहुत जबरदस्त। पहले साउथ अफ्रीका, फिर पाकिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, फिर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने गिव अप नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के मैच में तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टारगेट हासिल नहीं कर सके। शुरू में थोड़े हमारे बैटर्स थोड़ा सा स्लो ज़्यादा खेले थे, डॉट बॉल ज़्यादा खेले थे। आई थिंक फाइनल से पहले मसरूर और उनकी पूरी मैनेजमेंट इस चीज़ को ज़रूर देख रही होगी, लेकिन जीत पाकिस्तान की आज हासिल हुई। सीरीज दिलचस्प हो गई, आखिरी मैच भी उतना ही दिलचस्प होगा। वेरी वेल प्लेड साउथ अफ्रीका अंडर 19। जी हाँ, बिल्कुल टफ टाइम दिया पाकिस्तानी गर्ल्स को और इन टफ सिचुएशंस में से जब आप मैच जीतती हैं और अपना टेम्परामेंट दिखाती हैं तो यकीनन बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। ये पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड जिसमें कोमल ने 15 रन्स बनाए, रावेल ने 18 रन्स, थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार रही ओपनिंग बैटर्स, लेकिन बाद में उस चीज़ को अच्छे तरीके से पूरा करते हुए ज़ूफ़ी शाह और फिजा ने जो है वो अपनी साइड को विक्ट्री दिलवाई। ज़ूफ़ी शाह या आतिश फिशा, आज तो वाकई देखे उनकी स्ट्राइक रेट देखे आप, तमाम बैटर से कंपेयर करें, 44 on 29, वेरी वेल प्लेड। आखिरी ओवर में अगर टारगेट पाकिस्तान ने हासिल किया तो ज़ूफ़ी शाह की बरक रफ्तार बैटिंग और सेंसिबल बैटिंग फिजा की, जहां पे हिट करना था वहां हिट किया। पाकिस्तान ने मैच जरूर जीत लिया, लेकिन जैसे हमने बात कही कि आखिरी मैच में जो कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं, फिर इन बच्चियों की आहिस्ता आहिस्ता खामियां दूर होंगी, टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। ये बॉलिंग कार्ड मबासा 25 for 3, 6.25 के इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग की। इसके अलावा एक विकेट हासिल की कप्तान मीकी ने, बाकी कोई बॉलर उन्हें विकेट नहीं दिला सकी। और मियां से जिसकी ज्यादा उन्हें एक्सपेक्टेशन थी, आज थोड़ी सी एक्सपेंसिव रही अब तक की उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं उस लिहाज से, वो कि 6 का इकॉनमी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 6 एक्स्ट्रास थे। पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की इस मैच में, 43 for 4, और उसके बाद कम बैक, जबरदस्त जीत पाकिस्तान की। ये हाइलाइट्स आप देख सकते हैं जिस तरह रन चेज का आगाज हुआ। ओपनिंग बैटर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी देर वक्त लिया और एक अच्छा मैं समझता हूँ आगाज़ जो है वो अपनी टीम को दिलवाया। और उसके बाद यकीनन जो इनिंग्स है वो थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार हो गई थी, लेकिन बाद में ये पहली बैटर आउट हुई थी और कोमल को एक बहुत ही अच्छी गेंद पड़ गई थी कप्तान वोर्स्ट की, जिसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। और उसके बाद एक और बैटर जो हैं वो एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट हुई एंड ये तो एक गैर ज़िम्मेदाराना शॉट थी जिसकी वजह से डीटीपी को विकेट हासिल हुई। और उसके बाद ये ओवर था जहां से पाकिस्तानी इनिंग्स को मोमेंटम मिला। इस ओवर में 3 चौके ज़ूफ़ी शाह ने हासिल किए और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी बैटर्स ने ये समझ लिया था ज़ूफ़ी शाह और फिज़ा ने कि वी कैन डू इट, और अगर वो क्रीज पर जमकर खड़ी रहती हैं तो उनको यकीनन जो है वो बाउंड्री बॉल्स मिलेंगी। और प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया बॉलर्स के ऊपर, एट टाइम्स उन्होंने अपनी लेंथ भी बनाई और फुटवर्क का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनको बाउंड्री बॉल्स में अच्छी बॉल्स को कन्वर्ट करके उन्होंने मुसलसल जो बाउंड्रीज हासिल की वो यकीनन काबिल तारीफ थी। और एक बहुत ही उम्दा इनिंग्स ज़ूफ़ी शाह की और कप्तान फिज़ा फयाज की। बड़ी जबरदस्त जीत हासिल हुई है पाकिस्तान को। और अब जो आखिरी मैच खेला जाएगा वो बहुत ही दिलचस्प होगा। मैच समरी 109 रन 9 के 8 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद स्कोर किए थे 30 on 30 बॉल्स। शरिया टॉप स्कोरर थी 23 और 23 रन। प्रिंसर्ग और मारी ने स्कोर किए थे, जबकि
जैब ने 2 for 18, रोजीना 2 for 21 and 1 for 24. महानूर जवाब में पाकिस्तान U19 ने हदफ 4 गेंदों पहले हासिल किया, 113 पर 4. 6 विकेट से मैच में फतह हासिल की जोफिशा 44 on 29 बॉल्स एंड कैप्टन फिजा 28 on 27. और ये पार्टनरशिप थी जिसने पाकिस्तान को 6 विकेट से फतह दिलाई. मबासा 3 for 25 और एक मीकी ने आउट किया. इस वक्त जिशान खालिद जो हैं वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए तैयार हैं. ओवर टू यू जिशू. All right, it's time for the post-match presentation ceremony here at National Bank Stadium in Karachi for the 4th T20 International that was being played between the Pakistan Women's U19 and the South African Women's U19. And what a wonderful outcome for the home team as they secure a victory by 6 wickets, level the series 2-all, and we are going to be in for the decider on Friday, the last match of the T20 International Series. I've got Mrs. Sayyida Fatul Fatma Naqvi with me. She'll be handing over the player of the match. She's the selector of the women's cricket, and the player of the match today for her outstanding innings with the bat and a brilliant spell picking up a wicket, 44 runs on a wicket, it's Zulfisha Ayaz. She will be collecting her award from Sayyida Batul Fatma Naqvi. Came into bat when her team needed her innings the most, and she was able to stitch a partnership alongside her captain. Zulfisha, an innings that was required by you, by your team, and you batted beautifully with your captain. हाँ जी बिल्कुल, हमारा ये डू एंड डाई मैच था और हम अपने बेसिक्स पे रहे हैं. इजी चेस तो नहीं था कहेंगे, लेकिन ये है कि कुछ विकेट्स गिर गई थी तो मैं और फिजा का यही प्लान था कि लेके जाएंगे, आखिर तक बन जाएगा. और टीम ने बहुत सपोर्ट किया, बॉलर्स ने बहुत सपोर्ट किया और कोचेस का, और ये मैं अपनी मामा बाबा को और सर शुएब को डेडिकेट करूँगी. लो टोटल पे जाते थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि ऑपोजिशन भी काफ़ी स्ट्रांग थी, पिछला मैच अच्छा जीतती हुई आ रही थी और आपके ऊपर तले 2 विकेट्स गिर गई थी, लेकिन क्या आपने मैसेज डिलीवर किया था अपनी कैप्टन को जो आपके साथ बैटिंग करने आई थी? मेन यही था कि जो है सिंगल डबल करते रहेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पे रहेंगे, इंशाल्लाह आखिर तक इजी जाके ले लेंगे हम मैच. All the best, Zulfisha. You played really well. All the best for the last match. That was Zulfisha Ayaz, the player of the match for today's encounter. That is it for the presentation ceremony, but we'll be joining you once again with Ali Yunus with both the captains.
Voorst, what a turnaround. What a comeback in style by Pakistan under-19 girls to level the series 2-all by beating South Africa in this fourth game by 6 wickets. I've got the two captains alongside me. Time to talk to them and let's see what they feel about this match. A much important match. I'll start off with the Pakistan captain Fizza Fiaz. सबसे पहले बहुत-बहुत मुबारक हो. बहुत ही अच्छा मैच. Series level हो गई है. क्या emotions है? क्या feelings है? First of all, thank you so much. Ali bhai, it was a very important match. I think do and die match था. अगर हम ना जीते तो of course series हार जाते. लेकिन the way our team showed their efforts, I think each and every player put their hard work. और जिस तरह मानून ने कैच किया था वाज अ वेरी क्रूशियल कैच. उसके बाद थ्रू आउट पूरा मैच फील्डिंग बहुत अच्छी थी. ओवरऑल बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है. तीनों डोमेन्स में आज अच्छा था, इसलिए हमें सक्सेस मिली है. चारों डोमेन्स में आपकी कैप्टनसी भी बहुत रही. आपका एक मास्टर स्ट्रोक रहा जब आप बीच में स्पिनर को लेके आई थी, जब 2 विकेट्स आपने उनके एक ओवर में हासिल की. तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस आप खुद सोचते हो या पीछे से भी आपको कुछ हेल्प आती है? देखिए, जाहिर है कोचेस के साथ ही सब कुछ चलता है और कोचेस के साथ सब कुछ चलता है और उनसे भी हेल्प की गई थी. और जाहिर है फिर हमें तब विकेट चाहिए थी और वो बहुत क्रूशियल मोमेंट था. वो बहुत क्रूशियल कैच था जिसने पूरा गेम पलट दिया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द विन. एज अ कैप्टन आप पिच को कब एसेस करते हो कि इस पिच के ऊपर हमें इस तरह के बॉलर्स चाहिए, इस तरह की फील्डिंग चाहिए? पिच अगर तो मतलब जाहिर है जब आप पिच एक बार देख लेती हो तो पता तो चल जाता है कि किस तरह का पिच है. और जाहिर है हम वैसे भी पिछले 3 मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं तो सिमिलर विकेट है. और आज थोड़ा सा ग्रास था लेकिन स्टिल आई थिंक वो बॉलिंग पिच बैटिंग पिच ही था. लेकिन बस सिंपल सा ये प्लान होता है कि अगर विकेट टू विकेट बॉल की जाए तो सक्सेस आपको खुद ही मिलती है. Right. I'd like to talk to the South African captain, Mieke van Voorst. Being the second best in the game, what made you? Which was the turning point, if you say, because you were in the game for a long time. Yeah, I think there's really good fight shown by the girls. Firstly, well done to them. I think it was a really good fight from them. I think it's just there was a bit the slip up in the field or two, but there's a lot of learnings that we can take from that. I have to ask you this: if you're really taking about winning the series, or it's about giving all the youngsters opportunity to play in this series? I think obviously definitely the first goal is to win the series, and that's what we're looking to do. And we see where everyone fits into that. I have to ask you about these conditions. How well do you assess these conditions? Because in the previous game you were brilliant while batting first. What happened today? I think we have assessed the conditions quite well. I think it's not like we know how the pitch plays and we know what it requires of us. It's just now when we're going to do it. Yeah, last match to play, series 2-all. What can we expect? I think obviously it's a do or die situation. Both teams want to win. It's going to want who wants it more. Do we see more changes in the squad, or are you going to come in with your best 11? I think it's a final. You have to play your best 11, but we'll have to see. Right. Fizza, again coming back to you. 2-all. बहुत अच्छी सीरीज खेले हैं. South Africa is a quality side, number 2 in the world at this level. कोई pressure होगा final match के लिए? देखिए, honestly अगर देखा जाए तो नॉर्मल क्रिकेट अगर खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रेशर भी नहीं लेंगे और जाहिर है लेवल हो गई सीरीज. तो कंपेटिटर्स हैं वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है. बिल्कुल. एट दिस स्टेज आई थिंक नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब अच्छा होगा. ओवरऑल क्या आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को कैसे सम अप करते हो? जिस तरीके से लड़ाई कर रही है टीम, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है. आई थिंक आज जिस तरह खेल रहे हैं इस तरह थ्रू आउट द सीरीज अगर हम लेके चलते हैं. लेकिन इट्स ओके, गलतियों से इंसान सीखता है और इसी तरह इसी मोमेंटम को कैरी ऑन रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर फाइनल भी जीत जाएंगे. Right, thank you very much, captains. All the best for the final game. See you then. Thank you. Right, you heard it from the captains. Both captains are very hopeful for the last game. Pakistan captain surely will have the momentum after winning this very important game. We'll see you after one day's break for the game here in Karachi. Until then, take care and goodbye.